Delete the middle node of linked list. Oh my god. You are given a head of linked list, delete the middle of the middle node and return the head of modified linked list. The middle node of linked list is size n and n by 2 from start. Zero based index where x denotes the largest integer less than or equals to x. For example, only need to return middle element. I mean, remove the middle element. How do we convert an linked list to an array? Oh, we can't convert. We have to push the elements. Remove the middle element. What I can do is like I can just convert this into an array and remove the middle index alone. Or other way I can do is like I can find the real middle and disconnect it from the current thing now. I have two options to do right now. Hmm, are my values unique? No, if my values repeat. Hmm, I can do this. Let me see how. Hold on, I can convert. While my head dot x is there, until then, like you head dot val will work.
don't know. I'm going to get an TLE now. I got a TLE. No. Yeah, we got some TLE. uh, Let me just see how to convert and linked list to one. While my current, yeah, that's what I did. I had to move my thing. So until my current is not null. Once I get my array, then I can find the middle element by dividing by 2. I guess we got the array. Now what I can do is I can divide my whole array size. Like mid will be like mid index will be like my AR dot length divided by 2, which is going to give me the middle element, but I need to make it a math.4 since it can give me decimal value. So I can do like array dot length divided. Should it be outside or inside? I will have the middle element right now. What I can do is like I can assign. Let me check if we are getting the middle element first. Did I get the middle element? 0, 1, 2, 3. Yeah, we got it. And what about here? We got it as undefined. I got it 2. 0, 1, 2. What about this one? 0, 1. We got the middle element. Can I do this? Like, can, yeah, filter, and you're going to filter my element and ID, which is like ID not equals to my mid. Will I get the answer? I did some mistake in the filter, I guess. Just right syntax, like filter, and what are you going to filter? My is not equal to mid then. But how do I let it know like it is an index, not an element? It's trying to compare with an element, I guess. Maybe I can just create a new. I can either do this or like I can iterate. This is a long process of doing this, but answer will be right, I guess. If my I equals to mid index, then you're going to continue, and rest of the time you're going to progress my
array of I, which is going to be my current index. I know easy solution for this. Let me try it. This is working. So whenever my I index is equals to my mid index, then it is going to skip. Since we got the mid index already, so we don't have to worry about that thing. And after that, we are going to run from my 0 till end of my array, and after that, I'm pushing it to the result array and return. It wants me to return in list node. What the fuck? I can do this again, but it will be a big task right now. Let me use slow and fast pointer. We have a concept of slow and fast pointer in linked list, which is used to find the middle element. So let fast equals to head, and let's slow equals to head. While my fast exits, and then fast or next exits, until then you go, and slow equals to slow dot next, and fast equals to fast dot next, which is going to be two steps ahead. When my this thing will reach, and I'll get the middle element. I have to remove this. How do I remove? I got the middle element now. This is supposed to be my middle element. Once I found a middle element, then I have to find before index and mark this index with this index. Skip this index, which is we're going to use the next dot next. But we got the middle element. We need to get the middle element. So this is I can't do -1 since I won't be getting the index. I don't know if this will work like an array, but it doesn't work like that. I just need to remove the element now. I need to figure out how I can do it. The slow and next pointer is there, and after that, I got the my middle point is supposed to be if my fast pointer is at middle, then my slow pointer will be at the front index. So what I can do is I can slow dot next equals to my slow dot next, which is going to skip my current what do you call the thing current middle index, which is fast pointer. Once this loop ends, then my pointer will be at the middle, which is at fast here, and slow will be before that. So what we are going to do is like for slow dot next, we are going to point out to the next dot next, which is going to be this element. So it will ultimately skip this 7. It says null. Why does it says null? I need to write an one more condition on above. Yes, if my head is not there, then what? Or head dot next is not there, then we need to return.
Again it says slow property of null. Why property of null? This is the right way of writing this, getting the middle element. I'm getting the middle element. Oh fuck, I made a mistake here, sorry. Can we done? Can we do with the longest process possible? Like, be some different solution. This is straightforward solution for this. Okay. Getting the middle element and skipping the middle element. Can we do the solution by this way? Maybe I need to create an array. I have already created an array. Now I have to create the new linked list, and from there I have to add every node inside, I guess. How do we do this? Should I write a while loop and push my elements inside my new linked list, or like maybe do with a different? Answer. This was supposed to be with this thing. Kalai bro, எவ்வளோ நேரம் லீட் கோட் பண்ணுவீங்க? ப்ரோ மெசேஜை மறைஞ்சு போயிடுச்சு. How long are you doing it? This one, it took me like 5 to 6 minutes. I don't know when my stream started. Maybe 10 minutes, 10 minutes or 7 minutes, I don't know. This is easy question, bro. Let me comment my first approach, which was different. Should I explain my solution? Excalibur. Bro, they're asking me to remove the middle element, which is going to be my. I did two approaches. One was creating an empty array and pushing every element. Like I have pushed my 1, 3, 4, 7 and 1, 2, 6 inside it, okay? And after that, I'm going to take my mid element, which is going to be the total size of the array length, and ANTH divided by 2, which is going to give my middle element, okay? After that, I took a result array where I'm going to push every element except my middle element, which is like if I equals to my mid, then I'm going to skip this index alone, and rest of the element will be there like 3, sorry, 1, 3, 4, 1, 2, 6. All these elements will be inside my result array. Then after that, what I can do is like I can use the list node, which is going to be this one from here. We have a list node here. We can create a new list node for everything, and we can just do this list node dot next, and we are going to map with these values. I mean, not these values. I mean the result values. This thing. And if I connect everyone, and at the end I can just point it to the null. So initially, whenever you create an linked list, then at the end your pointer is going to point to the null since there won't be any value there. So this is what something it will look like. So this is one approach, doing it in a long way, but yeah, you have to use a lot of space. If you don't know how to do with the linked list, then you can't. I mean, you won't be able to figure out this solution since if you have already done some sort of solutions like this, like reaching the middle point and how to
how to calculate a midpoint or how to swap the elements in the linked list, then you can solve this question by using this fast and slow pointer. But if you are not aware with that thing, then you can use this approach, which is like straight brute force approach, and pretty much longer. Like you have to use two arrays and one linked list, a complete linked list. So which is like going to be my O of n square, O of n square, I guess, I don't know, like O of n square space complexity along with this linked list. I don't know how much it will come. But this is one approach, and other approach is this one. Like, let me copy this again. So we have an algo for finding the middle element inside the what do you call that thing, linked list, which is going to be my slow pointer and fast pointer. Both are going to point towards my head at first, but my fast pointer is going to start with two pointers ahead of the slow pointer, which is going to be my head dot next, which is ultimately starting from here. Like if your slow pointer is going to start from here, then your fast pointer is going to skip this element and skip this element, and it will start from here. And when you do like until my until my fast exists until my fast exists and fast dot next, which is like my fast dot next is like this is my fast, right? And my fast dot next exists or not, it will check. If this is true, then it's going to do it will move my slow pointer, which is going to be my slow dot next, which is like my next element. And for the fast pointer, it is going to be double jump, which is going to be f dot next. And once it reaches this pointer, it becomes null at point. And after that, when you check, when my slow pointer goes out of this thing, then my fast pointer would have reached the middle element already. So what I can do is like if my fast pointer has reached the middle, then my slow pointer will be here, since it is moving one space at a time. So what I can do is like I can point my slow dot next to the next dot next, which is like skipping these index. If this is my slow pointer right now, and this will be my fast pointer, and when I do s dot next, which is like if I do s dot next, then it will point to this one. If I do s dot next, then it will point to this, and this will ultimately get removed from here. So my answer will be like 1 3 4 1 2 6, which is like my middle element got removed. Then my answer will run for. So this is the solution for this thing. After a long time, I have done the POTD, PTOD or POTD. Problem of the day, POTD. Why does it beats only like 32 percentage? Can't I get more? It should be 100% solution, man. Like there is nothing much complicated here. I don't know like what is wrong with the. Now it beat 88 percentage. If I submit it again, it will become 100. I don't understand this thing, but let me try to do yesterday's question. A linked list of size n where n is even and ith node of 0 index of linked list is known as twin. If my I minus n minus 1 minus ith node is less than or equals to n divided by 2 minus 1. So do we have an length property on linked list?
How am I supposed to get my length now? Do I have a size property on linked list? For example, if n equals to 4, then node 0 is twin of 3. Node 0 is twin of 3, and 1 is twin of node 2. There are only nodes with twin. Um, they are the only nodes with the twins for the n4. Twin sum is defined as the sum of nodes and its twin. Sum of node and its twin. So they have given me head and linked list with the even length and return the maximum twin sum of the linked list. So we have to find the maximum sum of the linked list. Maximum sum of the linked list. And it is supposed to satisfy this condition here, I guess. And we have to return in some. Wow, what the fuck is this? They said like the number of node in list is even integer in range of 2 to the 10 2 till 10 to the power of 5. Node value is going to be my 10 to the power of 5. What are the topics? I need to use 2 pointer stack and linked list. Will I able to do this? In my linked list, my size is n, and where n is even an ith node of 0th index of linked list is known as twin of n minus 1 minus I nodes, and 0 less than equals to my I less than n divided by 2 minus 1. So this is my ultimate check right now here. I need to check if my current node is less than equals to my n divided by 2 minus 1. If that is true, then how are you twinning the things? I can't understand this thing. Like, for example, if n is 4 and node 0 is twin of 3. If n is 4, then node 0 is twin of 3. And node 1 is twin of 2. I don't understand this thing. So do we have a 4 value here? But we haven't even shown the 5th value. For example, if n equals to 4 and the node 0 is a twin of the node 3 and node 1 is a twin of node 2, and there are only nodes with twins of 4. So I have to check if my n is 4, which is like my size of that thing. How he is twinning that thing, I can't understand. So what is the answer for that thing then? If my node 0 and 1 are twin of node 3 and 2, then respectively all have twin sums equals to 6. There are no other nodes with twins in the linked list. Thus the maximum twin sum of linked list is 6. Um, the node with twin present in this linked list are node 0, which is twin of 3. How are they twinning this thing? I can't understand. Oh, we have to find all the twins and find the maximum out of that twin sum, I guess. But how are they? How are they pairing up the twins? I guess. How are we supposed to pair up? If this condition satisfies, then I have to pair them. Or like, do I have to do some different conditions right now? Like, where my n is even and ith node of 0th index is the linked list is known as twin of. Okay, to get the twin, we have to apply this formula, I guess. So for n, how am I supposed to get the n value right now? Let n equals to. Can I do header size or let me first console log in if I can see if we are getting the n value or like maybe length.
I don't know what property exists, like maybe size function, maybe it does come, but it's showing me undefined. It's a wrong thing. Right now, if I do size, it says size is not function. I guess size does not exist. So will it be length here too? Still, it does not give me anything. There will be length function. What is the method of getting the? It says length function is not defined. What is the property of uh, length in linked list? LinkedIn, what the fuck? Linked list JavaScript does not have a built-in function. Oh shit! Nah, bro, this is fucking crazy. I need to go till there. Like, I need to create an array for that thing just to find my bro. Just to find my. All right, man. While my head.next exists, let me take the current element right now. The current element. Let current equals to my head, and until my current exists, I'm going to push inside my array. So it's going to be array dot push current dot val, and I have to move my current, which is going to be current dot next, and it will move to the next pointer. Now I have my length, which is going to be my n equals to array dot length. I got the n value now. I guess it should work. In order to get the length, I have to do so much thing. What the fuck? If I print my n, then I should get my length of. There we go. We have the length 0, 1, 0, 1, 2. So it is like 4 elements. They got the n value. Now we are supposed to get the twinning elements. For the twinning elements, we have a formula, and even we have this thing right now. Now we need to check this. Can I directly do as an array itself? Like normally, we are accessing the element, then could I get that thing? Or should I only like do with the what do you call it? Can I reuse that thing? Like maybe I don't think we can use it. Reuse it again. While my current head is there, until then you're going to check if my length. They are using an I. It is like a for loop. So they are they hinting me to use an what do you call it? Hinting me to use an array. They have definitely used a stack, which just says like I need to go with the array itself. Like maybe since we have got the size of the array, maybe again from the linked list. Now we just need to find the twin elements and check what is the maximum twin we can find and return the maximum value out of it. Now I just need to figure out like if my n is less than equals to then my twin element will be that thing. For the current index, my twin element will be that. And after we find the twin element, then we have to do like whatever is there in that index and twin elements index, we need to add them and check if the sum is greater than the max. So let us maintain a maximum pointer, which is going to be my minus infinity. The fuck is this?
It should be like this. Minus infinity, and now I'm going to run over my whole array, I guess. So if I run through my whole array, then this is going to be my let I equals to 0. We're getting the I pointer, right? Array dot length, and it is going to be till here. If my condition is success, then I'm going to check for the twin element. So I'm going to get the index of the twin element and going to add it. Let me see. So what I could do is like I need to check if my I is less than equals to my uh, math math dot floor of n divided by 2 minus 1. If this is true, then I'm going to get my index of that thing. Array of, can I do it like this inside my array? I don't think I can do this. This is going to be my current index element right now. Do without using God. Oh, but they have mentioned like I need to use stack, like instead of using stack I'm doing it in a different way. So if my twin element is this is going to be my twin element, then this is my twin element, then what I need to do is that I can let my current element is going to be my index, current index, right? So array of index, which is going to be my current index right now. Which is going to be my current index, and I need to do it like I can. Maybe I can do it like if my I need to maintain a sum also. If my sum is greater than max, then what I can do is like I can store the max as sum and sum as 0. I don't know if this thing will work or not. Let me try. I knew this shit. Like index is not defined now. It should be this thing. What the fuck, bro? Seriously, seriously, in the first attempt, like, what the hell? I thought I'm going to get a fucking TLE, man. Like, is this the right solution for this thing, bro? I was not expecting the answer, man. First attempt. Damn. First time in my life I got a solution in first try. But it is not an optimal solution, like maybe 20% far. Since I'm converting it to an array and I'm doing a lot of operations here, like I'm using an array, and in order to get my size of array I'm doing a lot of operations here, like pushing every element and getting the index, and after that I'm comparing it. This is a normal thing, like O of n. Oh, this is like O of n and O of n, I guess. Like I don't think more than that. How do I see, like, did they mention any time complexity? Since the constant is smaller, it got accepted or what? I don't know, like 10 to the power of 5 is big number, right? Oh, on the first try, bro, crazy, bro. What the fuck? I'm going to flex now. We have a server for flexing somewhere, like.
Now, how do I optimize this? How do I do with the linked list now? Can we do with the without? I mean, like without using the array? I don't think we can do without using array since we need to get the what do you call that thing? Length of the array, which is like can't directly get the length of linked list in JavaScript since it is bit difficult, I guess. There is no, there is, where is that thing? Not this thing. How do I get the size, bro? What the fuck is that thing? There is no size for it. There is no size thing. Like, you have to iterate through the whole array and I have to get the size like after all. I don't have a straight operation for that thing. So I had to use an array, but can I do without array? How do I find it? When inside my linked list right now, like I can't do. Can I really do this? Like, let me see if I can do this. Maybe if I'm able to access this thing, then I can think I can do this. Like, I equals to going to be my head right now. This is my current head. Let me take current, which is going to be my head right now, and call it I equals to going to be my head, and after that I is going to tell. This is crazy, bro. In order to do that, I need to use the array. I guess I don't know. Like, I don't see any other way of doing this. How do I? Until when I can compare them? Like, can I do it till like until not equals to my current? What the fuck I can do, bro? I can't understand it. And I don't think this will work. I plus plus is going to happen now. The condition is going to be same thing, like literally the same thing, like what we are doing past thing. But instead of doing this thing, we are going to modify a little bit. So my I is going to be that thing, and twin index is going to be my. I don't think we can get an index out of linked list like this normally, since it can only be traversed by using next dot next or next dot next, or maybe we have only next and next dot next. We don't have any other operations. Like, we can't access them with the index. If this is true, then what we need to do is like I need to take the value of that thing. Maybe I can do current dot value. This should be current dot next, and this should be like dot current dot value, I guess. Now we have a twin index and current index, which is going to be current value and current twin index. This is not going to get me the twin index, bro. I need to pass the condition, I guess. Like, how am I supposed to do with my linked list now? I don't think like you can do with the linked list thing. Right? How can reversing a part of linked list help to find the answer? Wow. Do I need to reverse my linked list now? What is the solution then? If I reverse my linked list, then what is my solution? Let's see. If I reverse my linked list, then it is going to be like if I reverse my linked list, part of linked list.
If it is reversing, reversing is going to literally put the 4 here and 3 here. If I'm going to reverse this part alone and join it back here, then it is going to be like 2, 3, and 4, and 2. It does not help me. What the fuck these guys are doing? Like, how the hell am I supposed to do with my link this now? It says like on the zeroth node that twin is 3. So do I have to split my linked list and put this up here? Oh, yeah, splitting this thing is giving me answer. Let me bring it to the escalator. What the fuck? If I split my linked list like this from here to here and here to here and attach this thing here, seriously, it does not do anything. It is going to be 4 and 2. Well, how the hell am I supposed to access my index? That is the problem. We know that all nodes in the first half is a twin of the second half, so try dividing the linked list into half and reverse the second half. Reverse the second half. Reverse the second half. You mean reverse this second half? If I reverse my second half, then it is going to be my 4 2 and 3 2. Does this help me? Does this help me? Twin of 4 is supposed to be 3, which is this is my current value. This is going to be my current dot next dot next. Let me read a formula. Anyway, like 0 is going to be my first index for everything. Like after that, we need to find a twin index, which is going to be my, which is as per the question, it is like 3. So it is going to be my 4 plus 3. So this is going to give me some answer for this. And how do I get this? So imagine if my 4 is some current index, which is going to be current. Current is 4 now, and I have my 3. I have my 3 on which index? If I do current dot next, then it is going to point towards it too, which is going to be my current dot next. And if I do current dot next, then it is going to get me the index what I was supposed to get. This thing. What about the other index? 2 and 2. But for 2 and 2, it is different. Oh, since we have already swapped the index, right? Did we swap the index? First half are twins of second half, so try dividing the linked list into half and reverse the second half. So if I reverse my second half, then it is going to be 4 3 2. Oh, I see the pattern now. For my 4 it is going to be next dot next, and for my 2 it is going to be next dot next. Now I have to divide my linked list to half. How to divide my linked list to half? Reverse my linked list. Swapping. Reversing is like reversing is like swapping my elements. I need a temporary variable.
What kind of solution have other people have used? So they have found the middle index, and after that they took the previous as null and current as slow again. Current is not null then. This is mapping as I expected. Oh, bro. Do we have a left and right one? Oh, you took this thing here. Yeah. Haha, people have used my similar solution. I did not even need, I don't even need what do you call that thing? If we really need a sum, like maybe I can do max or max off and like get the value. Waste of resources, I guess. O of 1 does not matter. I need to see how other people have done this solution with using linked list like I have done with the array. This is what I want to like find the mid. Yeah, I know how to find a mid. And my mid is going to be targeting the slow, yeah. My next node equals to null and my mid not equals to null until my mid is not equals to null. So next node is going to be mid.next. Mid.next is previous and previous is mid. The ultimate swapping is happening here and after that we have to find it. Oh my god, this guy is crazy. Why I couldn't think a solution for this thing. I had figured out like I need to swap the thing, but after that I couldn't understand like how will I do this thing. I had to do only this thing, but swapping does not give me the value. Those are enough. Like we're doing like what next. So what are we doing here? Like we took the middle element and found the mid index. After that we took the reverse of second half, which is like swapping my whole thing. And after that, after swapping, yeah, once we find the middle element, then after middle element is going to be my second half. So my result is going to be 0 and current is going to be pointing to the head right now, which is like current head. Until my previous is not null, then we are going to find the maximum out of result and current value plus previous value. And we are moving the pointer. Oh, I couldn't think the solution for this problem. I did it with a different approach. Did anyone do the same approach as mine? Most of the people have figured out how to, I figured out how to reverse, but after that I couldn't figure out the answer. So this is how you have to do this, I understand. GG bro. I'm going to write my notes right now. Like, first I need to take the middle element. Reversing the second half, which is like after mid index, I need to notes. Now I need to directly check for the both. From start till end, iterate from start till end, keep and result, and find the maximum of um, first node and
Second node. To second node and yeah, return the maximum. Okay, we made a note. So right now for this thing, we did the different approach. Let me see if we have something else different. Why people have only used a single solution? Like, was it me alone? Like, I thought a different solution. I converted it to an array and I just iterated, man. Like, everyone had done with this slow and fast one. Oh, this looks so small. Like, what the fuck? Fast and slow, this is fine. Like, okay. He swapped and he ran everything like he did in a single loop. I like the syntax, bro. Oh, we have only one approach of doing this thing. Did anyone do this same solution as mine? Why I don't see the solution of that is similar to mine, bro. I think we found some solution similar to mine. I guess like he used a stack, but instead of stack, I used a normal array. I guess. Oh, not yeah, iteration, normal iteration. Oh shit! This is not the answer. What the fuck? This is a different thing. I was trying to experiment with the linked list. This is my solution. First, I pushed my every value inside my array and I took the length of the array, and after that I iterated and took this sum as 0, and from there I took the condition. First time I understood the question in my life. If this thing I understood, if this condition is true, then only we have to check for this thing like which is going to be my twin index. This is going to be my twin index, so I named it as a twin index, and I directly access the value of the twin index and current index, and I took the sum of those two things, and after that I compared it with max, and if it is greater than my max, then I'm just making my max as sum and I'm making my sum as 0 and return max. It worked. I was expecting an TLE, but I don't know. Like I'm just trying to let me see the stack solution. How the stack solution. So temp is going to be my array currently, and node is going to be my current head. Okay, node until node, and he pushed everything. And oh, let's see. Uh, this seems similar to my solution, but it does pop something. But I haven't done any popping. Like I just iterated and used some variables. That's it. Let me ask, what do you think about my solution? Like, what does AI think? Pretty solid. Wow. Yeah. Total work and yep, yep, yep. Oh, many people. Oh, I don't know. I know. Didn't I remove the thing at the first? I was experimenting, but at the end I just changed it back, right? So sum is useless. Yeah, I know. I could have done normally like this thing, right? Instead of this loop can be clear. Oh, I see. Oh, I had this. Oh, okay, much cleaner. Instead of using some variable, for my understanding, I put the something. If you come up with yourself during this interview, then logic is 8.5 and code quality is 7, optimization awareness 7. Only thing interviewer asks like, can you do it in one space? Then you need the classic, find the middle,
This is the algo for finding the answer for this solution. But if you want to do brute force way, then we could do it. We could do it in this way. Yes. Cool, bro. I will try to. I'll try to learn this method also. Like I need to think in this method also. Like if some linked list is given, then I have to swap them and I have to take the reverse and breaking the linked list and taking something from our. I need to look at it. So today I'm going to learn maybe some recursions, I guess. Once I learn recursion, then I can learn backtracking after that. Since backtracking requires recursion, so I'm going to watch some tutorial. Does anyone have the best recursion playlist that can be used later for the backtracking, which is like ultimate thing you must know before doing backtracking? It's creating a game. He or she? Is it she? Uh, no, he is he. Is a male. It's a male. Tick, 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 tock, tock, tock. Now we need to learn recursion. So, recursion backtracking. Does anyone does it in an easy way, bro? Does anyone teach me the easy way? Apna college. People will hate me if I start watching that too. CTO bhaiya. Who is this guy? Why does he have a Golan's photo here? Like he is teaching Java here. Can we watch Aditya Verma? Like he is famous for backtracking and recursion, right? Maybe I can watch his tutorial. I mean, maybe his. ओके सो है सो इस वीडियो से हम लोग रिकर्सन स्टार्ट करने वाले हैं. रिकर्सन पे 10 to 15 वीडियोस होंगे. कूल. एंड बिफोर आई स्टार्ट Where is my chat? Oh, it's here. Why there is no chat here? Oh, nobody chat. Not ChatGPT. Why? Oh, nobody chat. Why the fuck I sound like that, bro? मेरे को मेरा आवाज ही पसंद नहीं है. छी. It's just shit like my face. The fuck is texting? There is an. Wait.
No matter who is there, but you can't learn 100% of something. Every time you have something new to learn, bro. I'm going to watch backtrack. Recursion and backtracking technique. Verma ji. What is his name? I don't know the full name. Oh, Verma. Aditya Verma. And this tutorial is going to be in Hindi, but I don't know if you guys can understand. But yeah, I don't find any other good playlist right now. दो चीज़ें, फर्स्ट आई विल टर्न यू इनटू अ जेडाई इन रिकर्सन, बट द कंडीशन इज यू मस्ट नॉट स्किप एनी वीडियो. ओके, कूल. तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो इस वीडियो का फ्लो क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैंने ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा यूट्यूब सर्च करा, ठीक है. मैंने देखा कि रिकर्सन पे क्या क्या कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब बेसिकली अगर अच्छे से किसी ने समझाया हुआ है तो मैं क्यों मेहनत करूँ, है ना. तो मैंने देखा तो सब लोग क्या बोल रहे हैं, सब लोग एक बात बोल रहे हैं कि रिकर्सन में हम लोग इनपुट को स्मॉल करते हैं, ठीक है. मतलब मैंने 100 वीडियो देखी से, तो 100 के 100 लोगों ने ये तो बोला ही बोला कि रिकर्सन में इनपुट को स्मॉल करते हैं, ठीक है. पर किसी ने ये नहीं बताया क्यों, है ना. और मैं ये बताने वाला हूँ कि एक्चुअली हम लोग इनपुट को स्मॉल क्यों करते हैं, और बेसिकली इनपुट को स्मॉल करना चाहिए भी कि नहीं, है ना. ठीक है. सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास, कि रिकर्सन क्या बताता है, डिसीजन स्पेस बताता है, ठीक है. उस पर आएंगे. फिर रिकर्सिव ट्री, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई भी प्रॉब्लम करनी है तो रिकर्सिव ट्री इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, है ना. यू मस्ट नो हाउ टू डिजाइन अ रिकर्सिव ट्री, ठीक है. अब फोर्थ क्या है कि दो स्टेप बताऊंगा मैं. दो स्टेप में कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इजीली, है ना. 2 स्टेप्स, ठीक है. तो अभी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या है हम लोग का, कि मेक इनपुट स्मॉलर बट वाई, है ना. मेक इनपुट स्मॉलर बट वाई. चलो इस पे देख. सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं कि हर कोई बोल रहा है मेक इनपुट स्मॉलर, ठीक है. बट वाई, वाई कोई नहीं बता रहा कि ऐसा करना क्यों है, ठीक है. Why? तो देखो, एक्चुअली में हम लोग रिकर्सिव प्रॉब्लम में इनपुट को स्मॉल नहीं करते हैं, ठीक है. पहली बात सुनो, बहुत ही अजीब लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि हर कोई ये सिखा रहा है कि इनपुट को स्मॉल करते हैं. हम लोग इनपुट को स्मॉल नहीं करते हैं, इनपुट स्मॉल हो जाता है. अच्छा, अब डिफरेंस क्या है, ठीक है. इनपुट स्मॉल करते नहीं है हम लोग, डेलिबरेटली नहीं करते कि हाँ इनपुट को स्मॉल करना है. इनपुट ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाता है. अच्छा, तो हम लोग करते क्या है, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग कुछ और काम करते हैं, विच इज दिस क्वेश्चन मार्क. उसके एज अ रिजल्ट या फिर एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इनपुट हमारा स्मॉल हो जाता है, ठीक है. अच्छा, तो ये क्या करते हैं फिर यहाँ पर, तो ये जो काम है ना, ये मेन है, ये प्राइमरी है, एंड इनपुट स्मॉल तो सेकेंडरी है, वो एज अ रिजल्ट होता है, ठीक है. Cool. तो प्राइमरी चीज़ क्या है वो, तो प्राइमरी चीज़ है हम लोग यहाँ पर कुछ डिसीजंस लेते हैं, ठीक है. कुछ डिसीजंस लेते हैं और उसके डिसीजन लेने के बाद, उस डिसीजन को लेने के बाद इनपुट स्मॉल हो जाता है. जैसे यहाँ पर है हमारे पास प्रॉब्लम है और हमने कोई डिसीजन लिया D1, तो हमारे पास पहले जो इनपुट होगा वो इनपुट छोटा हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, कैसे काम करते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं. सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमको चाहिए, हमारी प्रॉब्लम है कि हमको जॉब चाहिए, हाई पैकेज जॉब, ठीक है. सबको चाहिए, बड़े, ठीक है. हमको हाई पैकेज जॉब चाहिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है. अब हम लोग को हाई पैकेज जॉब चाहिए, तो हम लोग को क्या एक डिसीजन लेना पड़ेगा. यहाँ पर एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम लोग या तो क्या करें. पहला डिसीजन, अगर हम लोग अच्छे कॉलेज में एडमिशन करते हैं तो हम लोग का ये प्रॉब्लम ईजी हो जाएगा और सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा, प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा. तो हम लोग बोलते हैं पहला डिसीजन हम लोगों ने लिया, चूज अ गुड कॉलेज, ठीक है. गुड कॉलेज, अगर नहीं मिलता है अच्छा कॉलेज तो भी कोई बात नहीं है, बेसिकली उसके बाद भी तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो भी जॉब मिल जाएगी. तो पहला डिसीजन हम लोग का चूज अ गुड कॉलेज. तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम थोड़ी छोटी हो जाएगी. उसके बाद हम लोगों ने एक और डिसीजन लिया कि लेट्स से अभी हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है. डिसीजन लिया, रिकर्सन बढ़ता है, ठीक है. अबे अटक ये गया डिसीजन लिया कि हम लोग कोडिंग करेंगे, रिकर्सन यूट्यूब बढ़ेगा. भाई क्या. तो ये प्रॉब्लम जो है ना,
कि हम लोग को जॉब चाहिए हाई पैकेज वाली, ये और छोटी हो जाएगी। अगर तुम्हें डिसीजन तुमने ये लिया गुड कॉलेज, तो कंपनी आएंगी प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। फिर तुम्हें कोडिंग होगी तो कोडिंग में तुम कंपनी में सिलेक्ट होगे। इसलिए ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बगैर कोडिंग करे या फिर बगैर अच्छे कॉलेज में, चलो बगैर अच्छे कॉलेज में करे भी आ सकता है, हो सकता है तुम्हारा कोडिंग में अच्छी कंपनी में, ऐसा जरूरी नहीं। पर बेसिकली समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुमने डिसीजन यहाँ पर एक डिसीजन लिया, तो डिसीजन से ये तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी हो गई, ठीक है। एक और डिसीजन लिया, उसके बाद तुम्हारी प्रॉब्लम और छोटी हो गई। Cool। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली एक यहाँ पर एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को छोटा बनाने के एम नहीं करते हैं। स्मॉलर इनपुट, ये इनपुट है हमारा, तो हम इसको स्मॉलर इनपुट में चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक डिसीजन लिया, तो ये प्रॉब्लम का ये पार्ट है, हमने डिसीजन D1 लिया, तो अब प्रॉब्लम इतनी से हो गई, ये पार्ट हट गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक और डिसीजन D2 ले लिया, प्लस इस बार ये वाला पार्ट हट गया, तो प्रॉब्लम इतनी हो गई, ठीक है। तो अब देखो हम लोग ले रहे हैं डिसीजन, और उस डिसीजन के बेसिस पे प्रॉब्लम अपनी खुद ही छोटी हो रही है, और इनपुट खुद ही छोटा हो रहा है ना। हम लोग इनपुट छोटा कर नहीं रहे हैं, ठीक है। हम लोग इनपुट छोटा कर नहीं रहे हैं, इनपुट छोटा ऑटोमेटिकली हो रहा है। आ रही बात समझ। सो बेसिकली यही मैं बोल रहा था कि स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं, सम डिसीजन लेते हैं, दिस इज प्राइमरी, है ना, ये प्राइमरी गोल होना चाहिए हमारा। इन डिसीजन के बेसिस पे हमारा इनपुट जो है वो स्मॉलर इनपुट में चेंज हो जाएगा अपने आप, है ना, वो स्मॉल हो जाएगा अपने आप ही, ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो इतना मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ उस बात पे, हर कोई ऐसा बोलता है कि हाँ भाई इनपुट स्मॉल करना है, इनपुट स्मॉल करना है, ठीक है। पर ये बेसिकली गलत तरीका है सोचने का। हुआ क्या, लोग पहले ऐसा हुआ, देखो लोगों ने पहले ये शुरू किया होगा, ठीक है, डिसीजन को स्मॉल करना, फिर उनको समझ में आया कि हाँ यार इससे तो इनपुट स्मॉल हो जाता है, फिर अब लोगों ने पढ़ाना ये शुरू कर दिया कि भाई इनपुट स्मॉल करना है, ठीक है। पहले लोगों ने डिसीजन लेना शुरू किया, तो ऐसा हुआ कि ये सेकेंडरी चीज कभी कभी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है ना, ऐसा होता है ना। इसीलिए क्या होता है, कभी भी हम ऐसा होता है ना, आजकल हम देखते हैं कि कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है, सिंपल है, मतलब उसने वीडियो अपलोड करी थी वायरल होने के लिए नहीं, पर वो वायरल हो गई। तो वायरल इसमें क्या हो गया, वायरल इनपुट स्मॉल करो ऐसा हो चुका है। इनपुट एक्चुअली में स्मॉल नहीं करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस वीडियो पर ध्यान देना, ठीक है। और बेसिकली डिसीजन मेकिंग शुड बी आवर प्राइमरी गोल, ठीक है। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए प्राइमरी गोल, और उसके कॉन्सिक्वेंस में जो है स्मॉलर इनपुट तो अपने आप हो जाओ, ठीक है। Cool। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है हम लोग का, सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला वो है कि रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन हम लोग कभी यूज़ करते हैं जब हम लोगों को कोई डिसीजन स्पेस चाहिए, डिसीजन चूज करना है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, एज आइडेंटिफिकेशन काम करेगा, आइडेंटिफिकेशन ना। तो अभी क्या करना है कि तो रिकर्सन, जैसे मैंने बोला, रिकर्सन में क्या होता है कि हम लोग कुछ डिसीजंस लेते हैं, तो हम लोग को अगर आइडेंटिफाई करना है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करना है कि ये रिकर्सिव प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसमें हम लोग को कुछ ना कुछ चॉइसेस दे रखी होंगी, ध्यान से देखना, चॉइसेस प्लस डिसीजन, ठीक, चॉइसेस प्लस डिसीजन। उस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में हमको कुछ लगेगा कि हाँ इसमें हम लोग को कुछ चॉइसेस दे रखी हैं, और उन चॉइसेस के बेसिस पे हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली रिकर्सन क्या है, कभी भी कोई डिसीजन स्पेस हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो, तो रिकर्सन इज अ गुड चॉइस टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। चलो ये होगा। अभी इसके बाद मैंने क्या बोला था, थर्ड पॉइंट क्या है हम लोग का, थर्ड पॉइंट है रिकर्सिव ट्री, ठीक है, रिकर्सिव ट्री। अब यहाँ पर देखो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्योंकि अगर तुमने एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखा है, उसके लिए एक रिकर्सिव ट्री डिजाइन कर लिया है ना, तो उसके बाद उसका कोड लिखना विल बी अ केक वॉक। अगर तुमने रिकर्सिव ट्री डिजाइन कर लिया ना, तो कोड लिखना विल बी अ केक वॉक, ठीक है। क्यों बोला मैं इस पर इसलिए इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि रिकर्सिव ट्री, अगर मैं कोई रिकर्सिव प्रॉब्लम दे रखी ना, और मैं इसका रिकर्सिव ट्री बना लूँ, तो मैं वहीं पर ही कंसीडर कर लेता हूँ कि तो आई एम डन विद द प्रॉब्लम, मैं वहीं पर ही कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो अब रिकर्सिव ट्री क्या ड्राउन करता है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी, है ना, क्योंकि द ओनली वे टू लर्न इज थ्रू बाय एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पॉपुलर एग्जाम्पल है मेरे पास, सबसेट प्रॉब्लम, है ना। Are you concerned about defects slipping through the cracks? सबसेट क्या है कि हम लोग को एक स्ट्रिंग दे रखी होगी, लेट्स से ए बी और सी दे रखा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसके सारे सबसेट रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं, सारे सबसेट प्रिंट कराने पड़ते हैं। तो बेसिकली इसका एक सबसेट हो जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, फिर हो जाएगा ए बी और सी, फिर हो जाएगा ए बी सी और ए सी, और एक हो जाएगा ए बी सी। तो 0 लेंथ का, 1 लेंथ के, 2 लेंथ के और 3 लेंथ के, तो इतने सारे सबसेट आ गए इसके। हम लोग ए बी सी दे रखा है, तो हम लोग को ये सारी चीज़ें प्रिंट करानी है, कोई। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, ये रिकर्सिव, ये अभी मेरी बात मान लो, ये एक रिकर्सन प्रॉब्लम है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे है, कैसे तुम्हें समझ में आएगा, कैसे सोचोगे ये रिकर्सन प्रॉब्लम है कि नहीं। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि मेरे को एक स्ट्रिंग दे रखी थी ए बी और सी, ठीक है ना। और मैंने बोला कि इस ए बी सी जो मेरे को दे रखी है, इसके मैंने क्या लिख दिया, मैंने इसके कुछ सबसेट बनाए, तो मैंने एक सबसेट एम्प्टी बना दिया, फिर ए बी सी, ए बी, है ना, फिर बी सी, ए सी और ए बी सी, ठीक है। ये मैंने सबसेट बना लिया, ठीक है, खुद, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम है, तो उसमें तुम्हें क्या दे रखी होंगी, कुछ चॉइसेस,
कुछ चॉइसेस दे रखी होंगी और कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने इसका सबसेट, मेरे को नल सबसेट प्रिंट कराना था, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट कराना था, ये वाला, ठीक है। अभी मुझे ये प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पर क्या डिसीजन लिए, यहाँ पर मेरे पास चॉइस क्या थी, पहले चॉइस समझते हैं, मेरे पास चॉइस क्या है वो देखते हैं पहले। तो मेरे पास चॉइस क्या है, ए, बी और सी। मैं एक सबसेट बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास चॉइस है, मैं ए को इंक्लूड करूँगा या मैं ए को इंक्लूड नहीं करूँगा। चॉइस समझ आ रही है, मैं बी को इंक्लूड करूँगा, फिर बी को इंक्लूड नहीं करूँगा, मैं सी को इंक्लूड कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास चॉइस ये है कि मैं ए को इंक्लूड करूँगा, नहीं करूँगा, बी को इंक्लूड करूँगा, नहीं करूँगा, सी को करूँगा, नहीं करूँगा, ठीक है। तो इन चॉइसेस पे मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ, डिसीजन क्या होगा वो भी बता रहा हूँ, डिसीजन लेता हूँ उससे मेरा एक सबसेट बनेगा। तो अभी यहाँ पर वापस आ जाते हैं, मैंने क्या बोला कि मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए यहाँ पर। तो अभी मैंने क्या चॉइसेस क्या है मेरी, मैं या तो ए इंक्लूड कर सकता हूँ या तो नहीं कर सकता हूँ, बी इंक्लूड कर सकता हूँ या तो नहीं कर सकता हूँ, सी इंक्लूड कर सकता हूँ या तो नहीं कर सकता हूँ। मैंने डिसीजन क्या लिया, मैंने डिसीजन लिया कि मैं ए को भी इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। लेट्स से इसको जीरो से रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो जीरो मतलब मैंने इंक्लूड नहीं करा, बी को भी इंक्लूड नहीं करूँगा, सी को भी इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैंने बोला मुझे ए बनाना है, तो मेरे पास चॉइसेस क्या है, चॉइसेस अगेन मेरे पास ये दो चॉइसेस है हर बार, ठीक है। ए को इंक्लूड करूँगा, नहीं करूँगा, बी को इंक्लूड करूँगा, नहीं करूँगा, सी को करूँगा, नहीं करूँगा, ठीक है। इस बार मैंने डिसीजन क्या लिया, मैंने ए को इंक्लूड करा, बी को नहीं करा, सी को नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे जीरो, यहाँ पर भी जीरो। ऐसे बी के लिए डिसीजन क्या लिया मैंने, यहाँ पर मैंने बी के लिए 0 1 0 डिसीजन लिया, सी के लिए क्या 0 0 1। ऐसे ए बी के लिए डिसीजन क्या लिया 1 1 0, ठीक है। ऐसे 0 1 1 और यहाँ पर जाएगा 1 0 1 और यहाँ पर 1 1 1, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये मेरे डिसीजन है, ये एक मेरा डिसीजन है कि मैंने इसको इंक्लूड करा कि नहीं करा। चॉइस क्या थी, मैं कर सकता था, ये चॉइस थी मेरे पास, या तो कर सकता था या तो नहीं कर सकता था, ठीक है। और फिर मैंने करा क्या, जैसे इस वाले केस को ले लें, बीसी के, बीसी वाले को ले लेते हैं, बीसी स्ट्रिंग को ले लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास स्ट्रिंग दे रखी ए बी और सी। तो मेरे पास चॉइसेस क्या थी, मेरे पास चॉइसेस थी कि मैं ए को इंक्लूड करूँ, बी को इंक्लूड नहीं करूँ, ए को इंक्लूड, बी को इंक्लूड करूँ, बी को नहीं करूँ, और सी को इंक्लूड करूँ, सी को नहीं करूँ। मैंने बी सी स्ट्रिंग बनाई, तो इसमें मैंने डिसीजन क्या लिया, मैंने डिसीजन लिया ये वाली चॉइस प्लस ये वाली चॉइस और प्लस ये वाली चॉइस, ठीक है। मतलब ए की क्रॉस वाली, बी की टिक, सी की टिक, ये मैंने एक डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो ये डिसीजन बन गया, बी सी आ गया मेरे पास, कुल। तो मैंने क्या बोला हूँ एक तरह से कि हम लोगों को रिकर्सन में कुछ चॉइसेस दे रखी होंगी और उन चॉइसेस को समझ के हम लोगों को कुछ डिसीजन लेना पड़ेंगे, ठीक है। तो जब भी कुछ चॉइस और डिसीजन की बातें हो रही हैं, जब भी चॉइस और डिसीजन की बातें हो रही हैं, तो समझ लो इसमें रिकर्सन लगेगा ही लगेगा, ठीक है, कुल। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने एक और बात बोली, ठीक है। सेकंड चीज़ मैंने क्या बोली कि तुम ध्यान मत देना कि इनपुट को स्मॉल करना है, तुम खाली इनपुट ये है, तुम बस डिसीजन पर ध्यान दो कि तुम्हें डिसीजन क्या लेना है। डिसीजन कुछ ना कुछ लोग हैं तो खुद ही तुम्हारा इनपुट स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास क्या था, ए बी और सी। अब मैंने इसके लिए क्या चॉइस है, या तो ले सकता हूँ या तो नहीं ले सकता हूँ। मैंने इसको बी सी में कन्वर्ट किया ना, तो मैंने इसके लिए चॉइस, अब मैं एक डिसीजन ले लूँ, मैंने डिसीजन लिया कि मैंने ए को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, ये डिसीजन लिया। तो अब ए तो प्रोसेस हो गया ना, ए प्रोसेस हो गया, ए के लिए डिसीजन हो गया कि ए को नहीं लेना है, ये डिसीजन हो गया ए को नहीं लेना। अब क्या बचा मेरे पास, बी और सी बचा, ठीक है। तो देख रहे हो इनपुट ए बी सी था, मैंने एक डिसीजन लिया कि ए को नहीं लेना है, तो उसके बाद मेरे पास क्या बचा, बी सी, कुछ। अब मैं एक और डिसीजन ले लूँगा कि बी को लेना है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, खाली सी के लिए डिसीजन बचेगा। और फिर मैंने ये भी बोला कि सी को भी लेना है, तो फिर मेरे पास ये स्ट्रिंग आ गई। तो अभी यहाँ पर देखो ना कैसे इनपुट स्मॉल हो रहा है। पहले हमारे पास इनपुट था ए बी सी, है ना। फिर हमारे पास हमने ये डिसाइड किया कि मैं ए को नहीं लूँगा, तो मेरे पास इनपुट आ गया बी सी, ठीक है। डिसीजन लिया, उसके बेसिस पे ये इनपुट आया। फिर मैंने बी को डिसाइड किया कि बी को नहीं लूँगा, तो मेरे पास फिर से इनपुट क्या हो गया, छोटा हो गया। अब खाली सी बचा, फिर सी के लिए डिसाइड करा, तो हमारे पास स्ट्रिंग आ गई, कुल। समझ में आ रहा है कि कैसे वर्क कर रहा है। हम लोगों को हर कोई ये सिखा रहा है, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, हर कोई ये सिखा रहा है कि इनपुट है उसको स्मॉलर इनपुट में चेंज करो, ठीक है। गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, बट ये चीज़ क्या है, सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी। बेटर क्या होगा, आप प्राइमरी चीज़ से अप्रोच करोगे तो वो बेटर रहेगा बेसिकली, है ना। प्राइमरी क्या है, डिसीजन क्या लेना। कोई डिसीजन के लिए सोचो, डिसीजन के लिए सोचोगे तो खुद ही ये स्मॉलर इनपुट अपने आप हो जाएगा। दिस इज अ फॉलो अप, है ना। अगर तुम डिसीजन लेते हो उसके बाद फॉलो अप यही होगा ही होगा, एक स्मॉलर इनपुट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इनपुट कैसे स्मॉल करें, ठीक है। अब आ जाते हैं रिकर्सिव ट्री पे, ठीक है। अब आ जाते हैं रिकर्सिव ट्री पे, ठीक। तो रिकर्सिव ट्री कैसे बनाते हैं, अच्छा पहले तो ये समझते हैं रिकर्सिव ट्री होता क्या है, क्या होता है रिकर्सिव ट्री। अच्छा एक बार एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी पहले हम लोगों ने क्या इनपुट लिया था, हम लोगों ने लिया था ए बी सी, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि एक इनपुट ले लेते हैं थोड़ा छोटा ए बी, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, बस समझाने के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि हम लोग की स्ट्रिंग ए बी सी नहीं ए बी सी रखी है, ठीक है। तो इसके लिए सबसेट निकालना है। सबसेट कैसे निकालूँ, मैं तो मैं नल कुछ भी चूज़ नहीं करा, ए चूज़ कर लिया, बी चूज़ कर लिया, कुल, फिर ए बी चूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसेट्स आ गए। इसमें डिसीजन क्या हुआ, डिसीजन हुआ यहाँ पर मैंने ए को भी चूज़ नहीं किया, बी को भी चूज़ नहीं किया, यहाँ पर ए को चूज़ किया, बी को चूज़ नहीं किया, यहाँ पर ए को चूज़ नहीं किया, बी को चूज़ करा, यहाँ पर ए को भी चूज़ किया, बी को भी चूज़ किया, ये डिसीजन हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये जो डिसीजन यहाँ पर लिए हैं ना, ये हम लोगों ने हर एक चीज़ के लिए डिसीजन लिए। तो हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ताकि ये जो डिसीजन जो हमने लिए हैं ना,
इन डिसीजंस को, ये जो डिसीजंस यहाँ पर लिए हैं ये सारे, इन डिसीजंस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। बेसिकली हम लोग ऐसा तो नहीं दिखा सकते ना कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए टिक बी क्रॉस, है ना, कुछ अच्छा तरीका चाहिए। तो वो तरीका क्या है, वो है रिकर्सिव ट्री। It was actually me. I had to take me out of the equation. I had to eliminate. ठीक है, वो तरीका क्या है, वो रिकर्सिव ट्री है। अच्छा ठीक है, तो अब रिकर्सिव ट्री क्या होता है, कैसे बनाते हैं? तो रिकर्सिव ट्री बनाने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा मेथड निकाल के रखा है, उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट मेथड, ठीक है। गूगल कर लेना, कहीं मिलने वाला नहीं है क्योंकि मैंने नाम दिया इसका, है ना। अब इस मेथड में क्या करता हूँ मैं, तो देख लेते हैं क्या करना है मुझे। तो इसमें बेसिकली मुझे इनपुट दे रखा होता है, ठीक है, और एक आउटपुट लेता हूँ मैं। आउटपुट को मैं पहले इनिशियलाइज कर देता हूँ किसी चीज़ से, जैसे अभी कुछ भी छोड़ा, अभी मैंने कुछ ऐसा मान लो कि मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, और इनपुट दे रखा होता है। फिर मैं आउटपुट इनपुट से क्या करता हूँ, मैं आउटपुट 1 बना लेता हूँ और इनपुट कर लेता हूँ स्मॉलर ना, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आउटपुट 2 बना लेता हूँ और स्मॉलर इनपुट फिर से, ठीक है। ऐसे फिर मैं इस वाली नोटेशन करता हूँ, इससे आउटपुट 1 डैश ले लेते हैं इस बार, ठीक है, और स्मॉलर इनपुट जितना भी पहले स्मॉल था उससे और स्मॉलर, तो इस बार डैश ले लेते हैं। फिर यहाँ पर आउटपुट 2 डैश और स्मॉलर इनपुट, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। तो ये बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर बता दिया मैंने। कोई भी चीज़ का रिकर्सिव ट्री बनाना है, किसी भी चीज़ का रिकर्सिव ट्री बनाना है, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे ना, इसे मैं बोलता हूँ इनपुट आउटपुट मेथड, है ना। अगर तुम इसको फॉलो करते हो ना, तो आराम से रिकर्सिव ट्री ड्रॉ कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि पहले आउटपुट को हम लोग किसी चीज़ से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग इनपुट, तो हम लोग को दे रखा होगा इनपुट लेंगे, उससे हम लोग आउटपुट 1 बनाएंगे यहाँ पर और आउटपुट 2 बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इस इनपुट को, ये जो इनपुट दे रखा है, इस इनपुट को हम लोग स्मॉलर इनपुट में चेंज कर देंगे और ऐसे ही फिर से दोबारा करेंगे। इसका आउटपुट 1 डैश, आउटपुट 2 डैश और उसको स्मॉलर इनपुट में चेंज कर दिया, इसको भी स्मॉलर इनपुट में चेंज कर दिया। कोड अरे वसन। तो ये मेरा इनपुट आउटपुट मेथड है। अब काम कैसे कर रहा है देखते हैं। चलो, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा। जो इनपुट दे रखा था हम लोग को स्ट्रिंग ए बी, ठीक है। यहाँ पर ए बी दे रखा था। अब मैंने इस ए बी के लिए बोला था कि मैंने कुछ डिसीजन लिए थे ए बी के लिए। क्या डिसीजन थे कि मैं या तो नल स्ट्रिंग चाहिए, तो नल स्ट्रिंग चाहिए, तो मैंने ए भी नहीं लिया, बी भी नहीं लिया। मैंने ए ले लिया, ए स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग और ए बी, ये तो सारे सबसे कॉमन थे। यहाँ पे ए ले लिया, बी नहीं लिया, यहाँ पे ए नहीं लिया, बी ले लिया, यहाँ पे बी नहीं लिया, ठीक है। खूब। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनको मैं रिप्रेजेंट करूँगा किससे, रिकर्सिव ट्री से, ठीक है। रिकर्सिव ट्री से रिप्रेजेंट करने वाला। अब मैंने क्या बोला, रिकर्सिव ट्री बनाने के लिए मेरे पास एक मेथड है, जिसको मैं बोलता हूँ इनपुट आउटपुट मेथड। कोई चलो फिर देखते हैं इनपुट आउटपुट मेथड कैसे काम करेगा। तो मैंने बोला यहाँ पर इनपुट क्या है, इनपुट यहाँ पर दे रखा है ए बी, सॉरी इनपुट यहाँ पर दे रखा है ए बी। कोई अब यहाँ पर मैंने बोला इनपुट लूँगा, तो यहाँ पर आउटपुट लूँगा। इनपुट दे रखा है मेरे पास ए बी। मैंने बोला आउटपुट को, मैं आउटपुट को क्या करता हूँ, मैं आउटपुट को इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। अब इनिशियलाइज कैसे करेंगे आउटपुट को, आउटपुट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग से। कोड ठीक है, आउटपुट को मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया अभी के लिए। तो यहाँ पर आउटपुट को एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया। कोड अभी देखो, अभी मैं यहाँ पर हूँ, ए पे हूँ, ठीक है। अब मैं ए के लिए देख रहा हूँ, ए के लिए चॉइसेस क्या है, ए के लिए चॉइस क्या है, ए को ले सकते हैं या तो ए को नहीं ले सकते हैं। ये दो चॉइसेस हैं, या तो ए को नहीं ले सकते हैं या तो ए को ले सकते हैं। कोड अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ब्रांचेस होती है ना, जैसे रिकर्सिव ट्री में ये जो ब्रांचेस है ना रिकर्सिव ट्री में, ये बताती है नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होती हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस एक रिकर्सिव ट्री में जो होती हैं वो होती है नंबर ऑफ चॉइसेस, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या बताती है, नंबर ऑफ चॉइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चॉइस बता रही है, लेट्स से ये चॉइस बता रही है कि मैंने ए को नहीं लिया, अभी हम लोग ए पे है ना, और ये ब्रांच बता रही है कि मैंने ए को ले लिया, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर ए को नहीं लिया, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर मुझे आउटपुट 1 बनाना है और स्मॉलर इनपुट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आउटपुट 2 बनाना है और स्मॉलर इनपुट लेना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, मैंने डिसीजन ले लिया कि यहाँ पर ये डिसीजन, अभी अच्छा डिसीजन क्या है, ये तो दोनों क्या बता रही है, ये और ये ब्रांच दोनों चॉइस है। और जैसे ही तुम एक ब्रांच से नीचे यहाँ पर आते हो, तो वो एक तुमने डिसीजन ले लिया, ठीक है। मैं पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ कि रिकर्सिव ट्री के अंदर, है ना, इस बार लाल ट्री है ना, पहले हरा था। देखो अभी क्या है, ये जो रिकर्सिव ट्री है ना, इस रिकर्सिव ट्री के अंदर हर एक चीज़ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। और ये जो पूरा एक ये बता रहा है ना, ये पूरा एक नोड है इसके अंदर, ये पूरा एक नोड है। इसकी ब्रांचेस क्या बताती है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू नंबर ऑफ चॉइसेस। और जैसे ही हम लोग एक ब्रांच से नीचे आते हैं ना, जैसे ही एक ब्रांच से नीचे आते हैं, तो वो एक डिसीजन हो जाता है। कोई यहाँ पर, अब यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने एक डिसीजन ले लिया, ठीक है। अब मैंने डिसीजन ले लिया क्या, कि हम लोग ए को इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई तो आउटपुट में क्या है, आउटपुट पहले एम्प्टी था, हमने ए को इन आउटपुट में इंक्लूड नहीं करा, तो आउटपुट अभी भी एम्प्टी है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं कि डिसीजन लेने हैं। डिसीजन लेंगे तो इनपुट जो है वो स्मॉलर खुद ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने ए के ऊपर डिसीजन ले लिया कि ए को नहीं लेना है। अब इनपुट स्मॉल क्या हो जाएगा, ए को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ए पे तो डिसीजन हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो अब स्मॉलर इनपुट जाएगा बी। अब यहाँ पर चॉइस क्या रही, ये कि हम लोग को ए को लेना है। अब हम लोग इस वाले ब्रांच से जैसे नीचे आएंगे ना, तो वैसे हमने एक डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन क्या ले लिया हम लोगों ने, कि इस बार ए को इंक्लूड करना है। तो पहले आउटपुट क्या, स्टक हो गया क्या मेरा सिस्टम? पहले आउटपुट यहाँ पर देखो, पहले आउटपुट खाली था, तो इस बार आउटपुट में हम लोग क्या करने वाला है, इस बार आउटपुट में ए इंक्लूड करेंगे। आगे बात समझ।
आउटपुट में ए इंक्लूड कर दिया। अब जैसे हम लोगों ने ए के लिए डिसीजन ले लिया तो स्मॉलर इनपुट, मतलब पहले ए यहाँ पर था ए बी, अब इनपुट में हम लोगों ने यहाँ पर ए के लिए डिसीजन ले लिया तो इनपुट को ए से यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर खाली हो जाएगा बी। आगे सिमिलरली आ गया, देखो अब हम लोग आ गए बी पे, ठीक है, यहाँ पर बी पे आ गए, बी पे आ गए। अब हमारे पास फिर से दो चॉइसेस है, या तो बी को इंक्लूड नहीं करेंगे या तो बी को इंक्लूड कर लेंगे। ये दो चॉइसेस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा ये पूरा क्या है, ये पूरा एक नोड है, ये पूरा एक नोड है, ठीक है, रिकर्सिव ट्री का। ये दो चॉइसेस हो गई, या तो इंक्लूड नहीं करेंगे या तो इंक्लूड करेंगे। अगर और जैसे ही इस चॉइस से हम यहाँ पर आएंगे तो ये एक डिसीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर स्मॉलर इनपुट है, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर स्मॉलर इनपुट है, ऐसे आउटपुट स्मॉलर इनपुट, ठीक है। तो अब मैंने आउटपुट में यहाँ क्या बोला कि बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आउटपुट पहले क्या था, खाली, आउटपुट अभी भी खाली रहेगा। अब मैंने बी के लिए डिसीजन ले लिया, बी के लिए डिसीजन ले लिया कि मैं बी को इंक्लूड नहीं करना, तो इनपुट क्या हो गया, स्मॉल, तो बी को भी हटा दिया, इनपुट भी खाली हो गया, कोई। यहाँ पर है, यहाँ पर देखा मैंने डिसीजन लिया कि बी को इंक्लूड करना है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब बी के लिए डिसीजन ले लिया है तो बी को इंक्लूड नहीं करेंगे इनपुट में, क्योंकि बी के लिए डिसाइड हो चुका है, तो एक डिसीजन के बाद इनपुट हो गया स्मॉल, तो बी को हटा दिया इनपुट से। आगे बस ऐसे यहाँ पर है, आउटपुट में देखो बी को इंक्लूड करना है, अगर यहाँ पर डिसीजन लिया नहीं करना है और करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट में ए था पहले से, मैंने बोला बी को इंक्लूड नहीं करना, तो ए का ए ही रहेगा और इनपुट क्या होगा, खाली, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने बोला कि इसको बी को इंक्लूड करना है, तो पहले आउटपुट में ए तो था ही, अब बी भी आ जाएगा और यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, खाली, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आउटपुट में यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गई, यहाँ बी मिल गया, यहाँ ए मिल गया, यहाँ पर ए भी मिल गया। बेसिकली हम लोग सबसेट क्या थे, एम्प्टी स्ट्रिंग ए बी और ए बी, तो ये रही एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर है, ठीक है, ए यहाँ पर है, बी ये रहा और ए भी ये रहा। हम लोग को सारे सबसेट कहाँ मिल गए, यहाँ पर लीफ नोड में, ये सारे क्या है, लीफ नोड है, ठीक है, ये सारे लीफ नोड है। और धंधा वगैरह डायग्राम बस समझ में आ रहा होगा, है ना। ये सारे लीफ नोड है। हम लोग को आंसर कब मिल रहा है, जब भी इनपुट जो है हमारा एम्प्टी हो गया, यहाँ पर इनपुट एम्प्टी है, यहाँ पर इनपुट एम्प्टी हो गया, एम्प्टी और एम्प्टी। तो हम लोग को जब भी लीफ नोड में आंसर कब मिल रहा है, जब भी इनपुट हमारा एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। को अब समझ में आ गया। हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग सेम पेज पे हैं कि नहीं, है ना। मैंने क्या बोला कि हम लोग रिकर्सन में क्या करते हैं, रिकर्सन में डिसीजन लेते हैं और उन डिसीजन के बेसिस पे इनपुट हमारा खुद ही स्मॉल हो जाता है, ठीक है। अब मेरे को ये जो डिसीजन है इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे ए नहीं लिया बी लिया, ए ले लिया बी ले लिया, ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए रिकर्सिव ट्री बनाएंगे। रिकर्सिव ट्री में क्या होता है, ये एक नोड रिप्रेजेंट करता है। रिकर्सिव ट्री बनाने के लिए मैंने एक तरीका बताया तुमको, इनपुट आउटपुट मेथड बनाया, ठीक है। इनपुट आउटपुट मेथड से क्या करता है, बहुत सिंपल तरीके से रिकर्सिव ट्री बन जाता है। इसमें जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होती है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ चॉइसेस। और जैसे ही एक ब्रांच से हम लोग नीचे आते हैं वो हम लोग का एक डिसीजन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे थे तो हम लोग के पास दो चॉइसेस थी, हमने एक चॉइस पिक कर ली तो डिसीजन हो गया। बेसिकली यही तो होता है कि मेरे पास जैसे मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया, ठीक है। अब मुझे चॉइस मिली है, ठीक है। अब मुझे चॉइस मिली है, मुझे सीएससी लेनी है और या फिर मुझे कोई और ब्रांच लेनी है, ठीक है, एक्स ब्रांच एक्स, है ना। मुझे सीएससी लेनी है और ब्रांच एक्स लेनी है। अब मैंने चूज कर लिया, ये जहाँ पर था मैं अभी यहाँ पर था, तो मेरे पास दो चॉइसेस थी। जैसे मैंने एक चॉइस चूज कर ली वो डिसीजन हो गया, अब मैंने सीएससी ले ली, है ना। अब मैं वापस नहीं जा सकता, ठीक है। तो हमारा इनपुट भी स्मॉल हो जाएगा। इनपुट क्या था, पहले ये चूज करना था, उसके बाद आगे कुछ और चूज करना होगा। मैंने एक तो चीज चूज कर ली कि ब्रांच फिक्स कर ली मैंने, सीएससी है। अब आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेसिकली ये इतना समझ आ गया, जैसे यहाँ से आता है तो यहाँ पर एक डिसीजन आता है, फिर यहाँ पे एक और नोड, यहाँ पे एक और नोड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस बार थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं बस, क्योंकि इसलिए पुराना वाला काफी गंदा हो गया, ठीक है। तो इस बार क्या है, इस बार यहाँ पर आउटपुट है और ये इनपुट है। और मैं हर बार आउटपुट इनपुट नहीं लिखने वाला हूँ, ध्यान देना खुद ही, ठीक है। अभी इनपुट को मैंने इनिशियलाइज कर लिया 0 से, इस बार इनपुट ले लिया ए बी और सी, ठीक है। अब देखते जाओ फटाफट। ए पे है तो दो चॉइस है, ए को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं करेंगे या फिर कर लेंगे। तो इसमें क्या ए को इंक्लूड नहीं करा तो मेरे पास आउटपुट तो खाली रहेगा क्योंकि मैंने ए को इंक्लूड नहीं करा। और इनपुट में मैंने ए प्रोसेस कर लिया यहाँ आने के बाद, तो इनपुट में क्या हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए को इंक्लूड कर लिया तो आउटपुट में ए आ जाएगा और बी सी ऐसा रहेगा, ठीक है। अब फिर मेरे पास, अब मैं बी पे हूँ, बी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो कर सकते हैं। तो मैंने बी को इंक्लूड नहीं करा तो आउटपुट खाली यहाँ बचा सी, ठीक है। अब या तो मैं इसको बी को इंक्लूड कर लेता तो बी यहाँ आ जाता, सी खाली, ठीक है। cool। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी पे है, बी को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करा तो खाली ए तो था ही, ए तो ऊपर था ही ना, तो वो यहाँ पर ए डाल दिया और यहाँ पर सी। तो यहाँ पर अगर बी को इंक्लूड कर लेते तो ए के साथ साथ ए तो था ही, ए के साथ साथ बी भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी, फिर हम लोग यहाँ पर सी के लिए डिसीजन लेंगे, सी को इंक्लूड कर सकते नहीं कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। अब सी को कर लेते हैं, यहाँ पर सी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो खाली, इनपुट भी खाली, ठीक है। इनपुट यहाँ पर अब हर जगह इनपुट खाली हो जाएगा। तो मैं इस वाली रो के लिए, ये जो लास्ट रो में लिखने वाला हूँ इसके लिए मैं इनपुट नहीं लिख रहा बार, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट खाली, यहाँ पर आउटपुट में सी आ जाएगा, यहाँ पर आउटपुट में बी है, ठीक है। यहाँ पर सी को ले गया तो बी सी हो जाएगा, यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर ए और सी इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पर खाली ए बी है, यहाँ पर सी ले लेंगे तो यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा। और इनपुट हर जगह क्या हो जाएगा, एम्प्टी, ठीक है। ये इनपुट हर जगह एम्प्टी हो जाएगा। अब देखो ए बी सी के लिए जितनी भी सब स्ट्रिंग यहाँ मिल रही है, एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ मिल रही है, ठीक है। ए मिल रहा है, ए रहा, बी ए रहा, सी ए रहा, ए बी ए रहा, बी सी ए रहा, ए सी ए रहा, ए बी सी ए रहा। तो हम लोग को आंसर कहाँ मिल रहा है, लीफ नोड में आंसर मिल रहा है जब भी इनपुट क्या हो रहा है, जब भी इनपुट हो रहा है खत्म, ठीक है। अब आ जाते हैं
आई होप समझ में आ गया होगा कि रिकर्सिव ट्री तो कैसे बनाना ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिकर्सिव ट्री बनाना तो आ ही गया होगा। अब मैंने 2 चीज़ें बोली थी, मैंने शुरुआत में 4 चीज़ें बोली थी, तो हम लोगों ने 3 चीज़ें कर ली हैं। पहली चीज़ क्या थी कि इनपुट स्मॉल करते हैं, ठीक है, इनपुट स्मॉल करते हैं, पर क्यों करते हैं वो बता दिया मैंने। इनपुट स्मॉल नहीं करते हैं, इनपुट स्मॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बोली कि रिकर्सन क्या बताता है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, डिसीजन यहाँ पर भी मिले, है ना, चॉइसेस एंड डिसीजंस प्लस डिसीजंस, ठीक है, चॉइसेस एंड डिसीजन जहाँ भी मिले वहाँ रिकर्सन लगेगा, कूल। और फिर आखिरी बात मैंने क्या बोली कि रिकर्सिव ट्री जो होता है वो क्या है, हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं कि डिसीजन जितने भी लिए हैं उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करें, ए नहीं लिया, बी लिया, ऐसे करके गंदा लगेगा, तो हम लोग रिकर्सिव ट्री बना लेते हैं, कूल। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, मैंने बोला 2 स्टेप्स हैं किसी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब वो 2 स्टेप कौन से होने वाले हैं, चलो देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, सिंपल था, डिजाइन अ रिकर्सिव ट्री। आई होप वो तो आएगा, रिकर्सिव ट्री, ठीक है। और स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड है फक द प्रॉब्लम, कोड, ठीक है, AKA राइट द कोड, राइट द कोड। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं बोल रहा हूँ बार बार ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम एक बार रिकर्सिव ट्री डिजाइन कर लेते हो ना, एक बार रिकर्सिव ट्री डिजाइन हो गया तो राइटिंग द कोड विल बी केक वॉक, ठीक है। तो स्टेप 2 जो है ना, राइटिंग द कोड विल बी वेरी इजी, है ना। अगर तुम्हारा ये रिकर्सिव ट्री अगर पॉइंट पे बनाए एकदम करेक्ट, तो ये कोड लिखना बहुत ईजी है। मैं बताऊंगा, अभी तुम बस ध्यान मत दो कि ये तो भी अभी तो लग रहा होगा यार ये लिया वो लिया ये नहीं लिया ये क्या करा, तो ये जो भी है ना ये सब रिप्रेजेंट। अब इसका कोड कैसे करेंगे, इसका कोड करना ये रिकर्सिव ट्री से बनाना भी आसान है, रिकर्सिव ट्री बनाने से भी ज़्यादा आसान इसका कोड करना है, बिलीव मी, है ना। ये आगे भी सीखेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया हम लोगों ने, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कि स्मॉलर इनपुट नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेकंड कि रिकर्सन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रिकर्सन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जब भी हमको चॉइसेस और डिसीजंस दे रखी हैं, है ना, चॉइसेस एंड डिसीजंस। 3 क्या बोला मैंने कि रिकर्सिव ट्री बनाना होता है, ठीक है। और 4 2 स्टेप बताया मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिजाइन और रिकर्सिव ट्री एंड फक द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब कोड लिखना है ना, कोड लिखना है ना, बहुत ईजी हो जाएगा कोड। आई होप समझ में आ गया होगा, थैंक्स। अच्छा एक और बात, आई हैव स्टार्टेड अ पैट्रियन अकाउंट। तो मेरे को किसी ने बोला था इफ़ यू आर यूट्यूब क्रिएटर यू हैव टू बी ऑन पैट्रियन, है ना। तो मैंने पैट्रियन अकाउंट बना लिया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने उसमें कुछ टीयर्स बना लिए हैं, है ना। सो इसका कोड जो भी मैं वीडियो में बनाने वाला हूँ, है ना, उसका कोड प्लस ये जो नोट्स हैं, है ना, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, अगर तुम इसको लिखते हो तो सही है, नहीं लिखते हो बेसिकली मुझे सही नहीं लगता। अगर कुछ लिखी हुई है तो मैं बेसिकली उसको वहीं से छाप लेता हूँ, उसको वापस नहीं लिखता हूँ, उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूँ। तो इसका कोड और इसके नोट मैं पैट्रियन अकाउंट पे डाल दूंगा, ठीक है। उसमें एक टीयर बना रखा है मैंने, उस टीयर में इसके कोड प्लस नोट मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर वैसे भी कुछ भी नहीं है तो सपोर्ट करना, सपोर्ट करने के लिए पैट्रियन है, ठीक है। सपोर्ट योर क्रिएटर, राइट, ठीक है, सपोर्ट योर फेवरेट क्रिएटर, ठीक है ना। चलो जो भी है, अभी हम लोग जा रहे हैं, बाय। It's still me against the world, free speech without reserve. It's still me against the church, there is demons in my words. When I'm dreaming up a verse, I can... ओके सो हाय अगेन। तो आई होप पिछले वीडियो को सारा क्लियर है, ठीक है। और पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो जाके देखना, ठीक है। रिकर्शन इज अभी मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि रिकर्सन इज एवरीवेयर, है ना, रिकर्सन इज एवरीवेयर। अगर तुम रिकर्सन स्किप करके, है ना, और रिकर्सन स्किप करके इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई, क्योंकि रिकर्सन ना हर एक डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, हर एक डेटा स्ट्रक्चर में। अच्छा ऐसे नहीं मान रहे तो मैं 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है। रिकर्सन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, वो एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं रिकर्सन से, ठीक है। ट्री जो है वो पूरा ट्री डेटा स्ट्रक्चर रिकर्सन पे बेस है, ठीक है। उसके लिए अगर तुम्हें रिकर्सन अच्छा है तो ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्राफ की बात कर लेते हैं
ग्राफ की बात कर लेते हैं, तो ग्राफ में डीएफएस वगैरह में रिकर्सन लगता है, फ्लड फिल एल्गोरिथम में लगता है, तो बेसिकली रिकर्सन बहुत जगह लगता है, ठीक है। और हाँ, ये सब तो चलो डेटा स्ट्रक्चर की बात हो गई ना। रिकर्सन बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर, नेम एनी डेटा स्ट्रक्चर, और मैं उसमें बता दूंगा कहीं ना कहीं कहाँ पर रिकर्सन लग सकता है, ठीक है। एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, हीप के क्वेश्चन में भी लग जाएगा, स्टैक में भी लगा सकते हो, क्वेश्चन आ जाते हैं मतलब रिकर्सन के बेस्ड पे, ठीक है। पर इसमें प्रोबेबिलिटी कम है ना। ट्री तो पूरा पूरा बेस्ड है, ग्राफ भी पूरा पूरा बेस्ड है, ग्राफ पूरा पूरा नहीं तो बट एल्गोरिथम है, डीएफएस हो गया, फ्लड फिल वगैरह हो गया। और साथ ही साथ अगर डेटा स्ट्रक्चर को अगर हम लोग इग्नोर भी कर दें, जैसे डेटा स्ट्रक्चर इग्नोर करते हैं, तो रिकर्सन के खुद के एल्गोरिथम में रिकर्सन पे बेस्ड है। तो मेन तो तुम लोग जानते हो, एक डीपी हो गया अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। बैक ट्रैकिंग रिकर्सन है, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है, डीएनसी, सब ये तीनों जो, ये तो तीनों खुद ही चाइल्ड रिकर्सन की हैं। तो समझ सकते हो ये खुद ही बड़े बड़े एल्गोरिथम डिज़ाइन वाली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। डीपी खुद एक एल्गोरिथम प्रॉब्लम है, बैक ट्रैकिंग भी और डीएनसी भी, और ये खुद ही सारे सारे ये बेस किस पे, रिकर्सन पे। तो रिकर्सन ना जितना यहाँ तक तुम सोच सकते हो ना, उससे आगे तक फैला हुआ है। सही बता रहा हूँ, पहले मुझे भी नहीं लगता कि रिकर्सन हर जगह लग सकता है, पर रिकर्सन हर जगह लग सकता है। तो रिकर्सन अगर नहीं आता है, और अगर तुम इंटरव्यू में जा रहे हो और सोच रहे हो कि इंटरव्यू में रिकर्सन चलो बगल पड़े चले जाएंगे और लूप लगा देंगे, बहुत गलत सोच रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड हु डज दैट, है ना। तो लूप तो बिल्कुल मतलब ना रिकर्सन के क्वेश्चन में, जैसे बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन हो गया, लूप लगाते रह जाओगे भाई, नहीं होंगे, ठीक है। तो रिकर्सन सीखो, जरूर सीखो, है ना, ठीक है। इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं रिकर्सन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं बोला क्योंकि रिकर्सन मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे इंटरव्यू में काम आएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इफेक्ट है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो भाई देख लो। तो अभी हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं रिकर्सन पे, ठीक है। तो ऊपर आ जाते हैं। तो पहले देखते हैं आज हम लोग मतलब हम लोग इस सीरीज़ में कौन कौन से क्वेश्चन पिक करेंगे। अच्छा, क्योंकि रिकर्सन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, जैसे कि मैंने बोला कि रिकर्सन तुम्हारे ट्री पे भी लग जाएगा, है ना, और ग्राफ में भी है, डेटा स्ट्रक्चर्स में भी है। अब डीपी के क्वेश्चन तो मैं डीपी थोड़ा बहुत कवर कर चुका हूँ पहले, बैक ट्रैकिंग में लग जाएगा, डीएनसी में लग जाएगा। तो मैं इतने सारा रिकर्सन तो एक साथ नहीं सिखा सकता। तो मैं अभी जो क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ ना, वो ओनली बेस्ड है रिकर्सन पर, ठीक है। मतलब उसमें और कोई नॉलेज नहीं चाहिए। मतलब मैं बेसिकली ऐसा ही नहीं क्वेश्चन ले सकता ना जिसमें ग्राफ प्लस रिकर्सन पिक नहीं कर सकता, क्योंकि या फिर ट्री प्लस रिकर्सन पिक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए ट्री भी पढ़ाना पड़ जाएगा। फिर मेरे को ये सीरीज में क्या है, बेसिकली एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले जाएगी, है ना। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी क्या है, रिकर्सन पढ़ना है खाली, है ना। तो रिकर्सन पढ़ेंगे। मैं डेटा स्ट्रक्चर प्लस रिकर्सन या फिर बैक ट्रैकिंग अलग पढ़ाऊंगा, डीपी इलेवन करके, और अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन पिक कर रहे हैं मैंने जो सोनली बेस्ड ऑन रिकर्सन है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, कूल। तो आ जाते हैं। और मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सोचे हैं, मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करा है कि कौन कौन से क्वेश्चन पिक करने चाहिए, ताकि अगर किसी में रिकर्सन कोई जीरो भी है ना, एकदम रिकर्सन एकदम बेसिक शुरू कर रहा है, तो उसको एकदम अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले तो हम लोग बहुत सिंपल सा काम करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे नंबर्स, ठीक है। नंबर्स प्रिंट करेंगे 1 to n या फिर n to 1, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, लूप लगा के नहीं, रिकर्सन भी करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स लिए ये बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे ईजी लेवल से, है ना। फिर हम लोग मीडियम पे आएंगे, फिर मैंने कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स भी चूज़ करें हैं जो कि मतलब गीक्स और गीक्स वगैरह में हार्ड कैटेगराइज करे आ चुके हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम तो क्या होगा कि प्रिंट करना है 1 to n और n to 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एरे को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एरे को सॉर्ट करेंगे रिकर्सन से। फिर हम लोग एक और प्रॉब्लम इसके बाद पिक कर सकते हैं, बेसिकली एक और प्रॉब्लम कर सकते हैं, सॉर्ट एंड स्टैक, स्टैक, है ना, सॉर्ट आ स्टैक। तो हम लोग स्टैक को भी सॉर्ट करेंगे रिकर्सन से, ठीक है। फिर डिलीट मिडल एलिमेंट इन स्टैक करेंगे। फिर रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम स्ट्रिंग, काउंट नंबर ऑफ अकरेंसेस। फिर हम लोग ये जो प्रॉब्लम मैंने जैसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में करी थी, वो सबसेट वाली प्रॉब्लम करेंगे। फिर परमोटेशन विद स्पेसेस, इसके बहुत सारे वेरिएशन बना सकता हूँ, कैसे भी मैं 4-5 मैं ही बना दूँगा अभी बैठे बैठे। तो परमोटेशन विद स्पेसेस विद केस चेंज, अब बहुत सारे बनते हैं, मिनी मोर, है ना। और लास्ट प्रॉब्लम होगा एग्जीक्यूशन इन सर्किल या फिर जोसेफस प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। ये इसको मैं बोलता हूँ, ये सारे बेस हैं अपने इनपुट आउटपुट मेथड पे, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया था रिकर्सिव ट्री कैसे बनाना है, फॉर रिकर्सिव ट्री में मैंने बताया ना कि इनपुट आउटपुट मेथड होता है, ठीक है। इनपुट होता है, आउटपुट होता है, फिर आउटपुट ये स्मॉलर इनपुट कर देते हैं, आउटपुट 1 और आउटपुट 2 कर देते हैं ना। तो वो उस मेथड पे है। फिर हम लोग एक इसी को एक्सटेंड करेंगे, इस मेथड को और भी अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इसको मैं बोलता हूँ एक्सटेंडेड इनपुट आउटपुट मेथड, है ना। जब पढ़ाएंगे तो उसके डिफरेंस समझेंगे क्यों मैं इसको एक्सटेंडेड बोलता हूँ, है ना। तो अभी इसमें क्या है, बाइनरी स्ट्रिंग विद नंबर ऑफ वंस ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ जीरो, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमको सारे वो स्ट्रिंग जनरेट करनी है जहाँ पर नंबर ऑफ 1 नंबर ऑफ जीरो से ग्रेटर है, नहीं। तो यहाँ पे 3 1 है, और ये मतलब बेसिकली हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये एक स्ट्रिंग आएगी। हम लोग को लेंथ n दे रखी होगी, उस लेंथ n की सारी ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है। फिर हम लोग जनरेट करेंगे बैलेंस पैरेंथेसिस, ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। सारे बैलेंस पैरेंथेसिस जनरेट करने पड़ेंगे एक ही इससे। तो ऐसा ऐसा या फिर ऐसा 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 बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसा, ठीक है। तो ये बैलेंस पैरेंथेसिस वाली प्रॉब्लम ये सारी जनरेट करनी पड़ेंगी एक लेंथ की। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स है।
सारी पिक करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम मेरे ख्याल से शायद हार्ड कैटेगराइज हैं गीक्स फॉर गीक्स पे या फिर इंटरव्यू बिट्स में, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, पर हाँ अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। इनमें से कुछ यहाँ पर मीडियम भी है, ठीक है, और ये शुरुआत की प्रिंट 1 to n और शॉर्ट एंड एरे मुझे पता नहीं है, पर मैं कैटेगराइज इनको ईजी में करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली अच्छे से पूरा सॉल्व करने वाले हम लोग स्टार्ट करेंगे इजी से, ठीक है, फिर मीडियम प्रॉब्लम्स में जाएंगे, फिर हम लोग हार्ड प्रॉब्लम में जाएंगे, ठीक है। मैं तुमसे खाली एक ही वो बोलता हूँ कि भाई कोई वीडियो स्किप मत करना। अगर वीडियो स्किप कर दिया ना तुमने तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या कि रिकर्सन इज प्रेजेंट बेटर ऑनलाइन कंपाइलर, यस। VS कोड में करूँगा भाई, पूरा इंटेलिजेंस दिखाते रहता सब कुछ। एवरीवेयर। जल्दी से सम अप कर लेते हैं। सम अप क्या है कि रिकर्सन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। तो ये हम लोग देखा कि रिकर्सन कितना इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में बगैर रिकर्सन को प्रिपेयर करके जाना बहुत ही गलत बात हो जाएगी। और रिकर्सन के क्वेश्चन लूप लगा के मत करो भाई, मत करो, ठीक है। और है ना, और क्या है, लास्ट हम लोगों ने देखा कि हम लोग कौन कौन से प्रॉब्लम्स इस सीरीज में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो दो तरीके से सीखेंगे, इनपुट आउटपुट मेथड जो मैंने बताया था, और एक और इसी को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंडेड इनपुट आउटपुट मेथड से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इजी से पहले इजी करेंगे और फिर इजी से मीडियम पे मूव करेंगे और मीडियम से फिर हार्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक्स। और सब्सक्राइब कर लेना यार, मैं कभी सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूँ। मुझे एक बंदा कमेंट में बोला था कि भाई सब्सक्राइब के लिए क्यों नहीं बोलता। सो बेसिकली अगर किसी को अच्छा लग रहा हो तो खुद कर लेगा, बोलने से नहीं होता। एंड इफ़ यू वांट सपोर्ट मी यू कैन सपोर्ट मी ऑन माई Patreon पेज। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट यू कैन गो देयर एंड कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू। It's still me against the world, free speech without reserve. It's still me against the church, there is True that once you start working in Finland, Social Security covers everything for free? ओके सो हाय। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाला है, इस बार हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग बेस कंडीशन, हाइपोथेसिस और इंडक्शन, ठीक है। बेसिकली दिस इज हाउ रिकर्सन वर्क्स, है ना। अच्छा, और ये हम लोग किसके हाथ से सीखेंगे, सिंपल एग्जांपल प्रिंट 1 to n, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि हम लोग को डिसीजन मेकिंग पे ध्यान देना चाहिए कि व्हाट डिसीजन शुड वी टेक, है ना कि इनपुट को स्मॉल करने पे, है ना। इनपुट तो अपने आप ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। पर ये काफ़ी पॉपुलर है, तो कुछ रीजन रहा होगा कि ये पॉपुलर हो गया, है ना। या फिर ये वाई मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, वाई मेकिंग इनपुट स्मॉलर इज पॉपुलर स्लैश इंपॉर्टेंट, है ना। तो क्यों है ये पॉपुलर। तो कभी कभी क्या है कि हम लोग इस तरीके से सोचते हैं ना क्या डिसीजन लेने, और हम लोग को समझ में नहीं आता कुछ भी डिसीजन। तो कभी कभी इसको इस तरीके से सोचने में ज़्यादा हम लोग को आसानी होती है ना, ठीक है। तो अभी ये बात बोल दी मैंने, तो इसके साथ साथ अभी हम लोग आते हैं इस तरीके पे, ठीक है, बेस कंडीशन, हाइपोथेसिस और इंडक्शन। अब ये क्या है ना। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि रिकर्सन हर जगह यूज होता है। तो बेसिकली मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर तो मिस कर ही दिया, लिंक लिस्ट, है ना। लिंक लिस्ट में तो हर जगह रिकर्सन यूज होता है, O(1) में करना है तो रिवर्स लिंक लिस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। खैर वो छोड़ो, अभी हम लोग आते हैं इस वाले वीडियो का फ्लो पे, है ना। तो इस वीडियो में फ्लो क्या रहने वाला है कि हम लोग देखेंगे क्या क्या मेथड होने चाहिए कि हम लोग अप्रोच करें रिकर्सिव प्रॉब्लम को किस किस तरीके से। बेसिकली एक तरीका तो मैंने बता दिया कि तुम्हें ये रिकर्सिव ट्री बनाना है, ठीक है। पर रिकर्सिव ट्री इज नॉट द ओनली मेथड, है ना। कुछ मेथड और भी हैं जिससे तुम अप्रोच करोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो। ये सारे मेथड क्या है, एक वेरिएशन ही है सिंपल से मेथड को, पर कभी कभी कोई मेथड से अप्रोच करना ईजी पड़ जाता है, ठीक है।
चलो, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या मेथड और हो सकते हैं एक रिकर्सिव प्रॉब्लम को अप्रोच करने के। फिर हम लोग देखेंगे कि इनपुट स्मॉलर जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर हम लोग ये प्रिंट 1 to n कराएंगे थ्रू रिकर्सन। ठीक है, बहुत सिंपल। 1 to n. Zero pass n equals to 10. If you want n. प्रॉब्लम लिए क्यों? क्योंकि मुझे ये समझाना है कि रिकर्सन वर्क कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अच्छी प्रॉब्लम पे आ सकते हैं आराम से। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि क्या क्या तरीके हैं। तो बेसिकली चार अप्रोचेस हैं किसी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम को अप्रोच करने की। ठीक है, तो पहली तो मैंने बता दी तुम लोगों को कि रिकर्सिव ट्री बनाना है। ठीक है, रिकर्सिव ट्री बनाने के लिए मैंने तुमको एक तरीका बता दिया कि इनपुट आउटपुट मेथड का यूज करो। ठीक है, आराम से रिकर्सिव ट्री बन जाएगा। सेकंड क्या बोलता हूँ मैं, सेकंड तरीका क्या है कि कभी कभी ये कब रिकर्सिव ट्री कब बनाना है, जब हम लोग को डिसीजन समझ में आ रहे हैं। जब हम लोग को डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी क्या है, केवल हम लोग को समझ में आएगा कि इनपुट को स्मॉलर करना है। ठीक है, जब ये समझ में आए ना, तो एक और तरीका होता है उसके लिए, बेस कंडीशन, इंडक्शन और हाइपोथेसिस। ठीक है, ये सोचनी पड़ती है। इस पर आते हैं क्या होता है। और तीसरा तरीका होता है चॉइस डायग्राम। ये शायद मैंने डीपी में बताया हुआ है। ठीक है, डीपी में बताया हुआ, अगर तुम लोगों ने डीपी सीरीज देखी हो तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा इन दोनों के बारे में। और फोर्थ अभी मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा। ठीक है, फोर्थ पर जब जरूरत पड़ेगी तब आएंगे। कूल, तो बेसिकली तीन तरीके हैं। तो हम लोग रिकर्सिव ट्री सीख लेना। अब हम लोग इस तरीके पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम लोग से पहले क्या करते हैं, किसी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम के लिए, जैसे वहाँ पर हम लोग रिकर्सिव ट्री डिजाइन करते हैं ना, वैसे यहाँ पर हम लोग उसकी हाइपोथेसिस डिजाइन करते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या होती है ना, वो देखते हैं। हाइपोथेसिस क्या है कि अगर तुम बोलो कि मेरा फंक्शन है सॉल्व, मान लो। ठीक है, ये कुछ इनपुट लेता है n। ठीक है, तो तुम इसको डिफाइन कर दो कि ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन है अगर, तो ये रिकर्सिव फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं डिफाइन कर दूं कि ये प्रिंट करता है 1 to n नंबर। ठीक है, तो ये 1 to n प्रिंट करेगा। ठीक है, रिकर्सन यही खासियत है, रिकर्सन वर्क्स लाइक मैजिक। तुम जो इसको डिफाइन कर दो ये वैसे ही वर्क करेगा। पर इसको वैसे ही वर्क कराने के लिए ना, हम लोग को इंडक्शन स्टेप में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है कोड, ताकि जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस डिजाइन करी ना कि ये फंक्शन ये रिटर्न करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सॉल्व एंड कॉल होगा तो 1 to n जो है रिटर्न होने वाला है। तो इसको वैसे वर्क कराने के लिए ना, इंडक्शन इसमें थोड़ी सी कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और बेस कंडीशन की बात कर लेते हैं। अभी ये सब क्लियर हो जाएगा, जब एक क्वेश्चन लूंगा ना तभी सब क्लियर हो जाएगा। बेस कंडीशन की बात कर लेते हैं। बेस कंडीशन के लिए मैं दो बातें बोल रहा हूँ, है ना, कि बेस कंडीशन क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। ठीक है, और या फिर स्मॉलेस्ट इनवैलिड इनपुट भी हो सकता है। मतलब स्मॉलेस्ट क्या, लार्जेस्ट बोल दो। मतलब बेसिकली अगर ये तुम्हारी लाइन है और ये इनपुट की लाइन है बेसिकली, है ना, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये सेक्शन पूरा वैलिड इनपुट का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेक्शन पूरा इनवैलिड इनपुट का है। तो रिकर्सन की बेस कंडीशन यहाँ कहीं लाई करेगी, स्मॉलेस्ट वैलिड आउटपुट हो सकता है, या फिर इस साइड में स्मॉलेस्ट इनपुट हो सकता है। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट हो सकता है इनवैलिड वाला। ठीक है, कैसे थिंक करना है, क्या करना है, सब समझ में आ जाएगा।
ये थोड़ा बहुत तुम लोगों को पता होगा, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर डीपी पढ़ के आए हो तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया कि ये क्यों करना है, अब इनपुट स्मॉलर क्यों करना है, चलो इस पर भी आते हैं, और प्रिंट 1 to n पे, ठीक है। प्रिंट 1 to n क्वेश्चन है जो, इसको करते हैं, cool। ठीक है, तो हम लोग इसको रिकर्सन से करने वाले हैं ना। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई रिकर्सन से करने की क्या जरूरत है, हमें तो लूप आता है। तो भाई देखो, रिकर्सन पढ़ा है ना, तो हम लोग लूप वूप नहीं लगाने वाले, सिंपल क्वेश्चन है। और इसको अभी क्या है, अभी मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि कैसे करना है ना, ताकि ज़्यादा टिपिकल नहीं लगे। और एक बार रिकर्सन की फाउंडेशन मजबूत होगी ना, उसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हाँ, अच्छे क्वेश्चन से एक याद आया, अगर तुम लोग को कोई क्वेश्चन लग रहा है हार्ड, I started using ChatGPT, but on the workload increase, not salary. See, you're not the only one using ChatGPT. More than 100 million people. रिकर्सन का, तो कमेंट में लिख देना, आई विल मेक श्योर कि मैं इसको लूँ, या फिर देख लूँगा अगर अच्छा लगेगा मुझे क्वेश्चन, या फिर हो सकता है सीरीज में इंक्लूड कर लूँ, है ना। चलो, तो अभी प्रिंट 1 to n करते हैं, खुद कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, इनपुट आउटपुट समझ लेते हैं। बेसिकली समझ में आ ही रहा होगा, इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन है नहीं। इनपुट में दे रखा होगा तुमको एक नंबर n, और आउटपुट में तुम्हें कराना होगा 1 2 3 4 करके n तक, ठीक है। जैसे इनपुट में दे दिया तुमको 7, तो आउटपुट में तुम्हें प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 7, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या करना है, क्लियर। अच्छा, तो मैंने बोला किसी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम के लिए, ये रही मेरी रिकर्सिव प्रॉब्लम, प्रिंट 1 to n बाई रिकर्सन। मैंने क्या बोला, इसके लिए मैं डिजाइन करता हूँ हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये जो मेथड है ना, इंडेक्शन बेस कंडीशन हाइपोथेसिस, IBH, है ना, इसको आप समझ लो IBH बोलेंगे, IBH मेथड। ये बहुत काम आता है कहाँ पर, जहाँ पर ट्री होता है, ट्री के क्वेश्चन होते हैं, और या फिर लिंक्ड लिस्ट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ट्री वगैरह में काफ़ी काम आता है ना ये क्वेश्चन। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बाकी तुम लोग यूज़ कर सकते हो। अभी मैं ट्री के क्वेश्चन नहीं इंक्लूड करूँगा, क्योंकि फिर वो अलग डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी हम लोग रिकर्सन में फोकस करेंगे, ठीक है। तो until the start, not starting. Oh, oh, eh, until my start is less than is fine. Then it could start. Why the fuck print start is not getting dead? End is not going to be changing anything. So my start is going to change. It is going to change here. Yeah, my start is less than my end, then you do this. Should I grab it? It's a previous one. As one until your start is less than 0.
है first print after in. There we go. Less than n 99 100 sir. आईबीएच मेथड है, ये ट्री वगैरह में और लिंक्ड लिस्ट वगैरह में बहुत काम आता है। चलो, तो हम लोग का स्टेप 1 क्या होना चाहिए? हम लोग का स्टेप 1 होना चाहिए हाइपोथेसिस डिजाइन करनी है। ठीक है, डिजाइन करनी है हाइपोथेसिस। तो मैंने बोला कि मैं फंक्शन बनाऊंगा, लेट्स से नाम रखता हूँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट, इसमें मैं एक नंबर दूंगा, मैंने बोला 7 दे दिया। ठीक है, ये मुझे कहाँ से मिलेगा? ये मुझे इनपुट से मिलेगा। कूल, ठीक है, ये मुझे इनपुट से मिलेगा। अब मैं ये बोलता हूँ कि ये प्रिंट 7 क्या करेगा? मुझे 1 2 3 4 5 6 7 तक प्रिंट करा के दे देगा। चलो ठीक है, फिर मैंने बोला अब मैं यही चीज़ जो है ना, ये एक स्मॉलर इनपुट पे कॉल करूँगा। ठीक है, ये अगर n था तो इस बार मैं n-1 पे कॉल करूँगा। ठीक है, तो मैंने बोला प्रिंट n-1 पे कॉल करूँगा, मतलब कि आपकी ये कॉल हो रहा है 6 पे। खुद अच्छा, इंडक्शन याद है, पहले पढ़ा था, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना? बेसिकली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि अगर प्रिंट n क्या करता है, हम लोग अगर सिंपलिटी देखें तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग देखें कि प्रिंट n क्या काम करता है, प्रिंट n 1 2 3 4 करके n तक प्रिंट करता है, तो प्रिंट n-1 क्या करेगा? सिंपल सी बात है, 1 to n-1 प्रिंट करेगा। ठीक है, My name is Thomas Kemper. Audi. I'm an IT solutions architect here at Audi. We use Cisco's SDA to secure our factory of the future. And this is how I Cisco. For me, one of the biggest wins with SDA is automation. We don't have to touch. इसमें कोई टिपिकल बात नहीं होनी चाहिए। तो प्रिंट ये क्या करेगा? 6 1 2 3 4 5 6 ला के देगा। ठीक है, पहले हम लोगों ने हाइपोथेसिस डिजाइन करी, हमने बोला कि हम लोग का फंक्शन क्या करेगा, तो हम लोग उसी फंक्शन को एक स्मॉलर इनपुट पे चला के देखा कि हम लोगों ने बोला कि यार अगर मैं इनपुट थोड़ा स्मॉल कर दूं, पहले n था 7 था, फिर मैंने n को n-1 कर दिया, बोला तो 6 हो गया, तो 7 पे क्या काम कर रहा था? 1 2 3 4 5 6 7 तक प्रिंट कर रहा था, तो अब 6 पे 1 2 3 4 5 6 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या होना चाहिए हम लोग का? स्टेप 2 होना चाहिए इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन में क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोगों ने ये पता चल गया कि हम लोग इसको इस पे कॉल करते हैं तो हम लोग ये मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या रहेगा? अब इस वाले में खाली एक नंबर रह गया है जो प्रिंट कराने का, वो है 7। ये बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हम लोग लिखा है ना, ये काम ये ऐसा करता है, वो हम लोग इंडक्शन स्टेप में करेंगे। तो मैंने बोला अगर मुझे प्रिंट n दे रखा है, किसी ने बोला प्रिंट n लिखना है, तो मैं बोलूँगा मैं कुछ काम नहीं करने वाला, मैं बोलूँगा प्रिंट n-1 को कॉल कर दूंगा। ठीक है, प्रिंट n-1 क्या करेगा? ये तो मुझे 1 to n प्रिंट ला के देगा, और प्रिंट n-1 क्या ला के देगा? 1 to n-1। मुझे कुछ काम नहीं करना है। तभी लोग बोलते हैं रिकर्सन वर्क्स लाइक मैजिक। तुम कोड लिखते ही नहीं हो रिकर्सन में, तब भी कोड काम करता है। कोड कैसे काम करता है? ये जो तुम इंडक्शन स्टेप में जो लिखने वाले हो ना, उससे काम करता है। बहुत मैटर करता है इंडक्शन स्टेप। तुम अपने फंक्शन को जो तुम बोलोगे ना, फंक्शन वो काम करेगा, अजीबो गरीब काम कर देगा, बस तुम इंडक्शन स्टेप से ही लिखोगे ना, बस ये मैटर करता है। तो मैंने बोला ठीक है, अब इंडक्शन स्टेप में क्या है कि मुझे कोड पूरा करना है, मुझे 1 to n तो मिल गया, मुझे इसके बाद n और प्रिंट कराना है। तो मैंने बोला प्रिंट n-1 हो गया, अब बस मैं आखिर में प्रिंट करा दूंगा n। वही हो गया कोड हम लोग का। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिसिंग है? हाँ, बेस कंडीशन। कोड, तो अब बेस कंडीशन की बात कर लेते हैं। बेस कंडीशन के लिए देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला है। मैंने क्या बोला? स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। ये इनपुट की लाइन है हमारी, ये इनपुट लाइन है हमारी। ठीक है, ऐसे नंबर लाइन होती है। तो ये इनपुट में n दे रखा हुआ, ऐसे n होगा स्मॉलर तो n-1 पे आएगा, n-2 पे आएगा, धीरे धीरे करके ये 1 पे आएगा, फिर ऐसे यहाँ से 0 वगैरह नेगेटिव में शुरू हो जाएगा, -1 में ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग को प्रिंट कहाँ से कहाँ तक कराना है? हम लोग को प्रिंट कराना है 1 to n। ठीक है, 1 to n। समझ में आ रहा है? स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है? स्मॉलेस्ट वैलिड 1, जो हम लोग को प्रिंट कराना है 1। बेसिकली हम लोगों ने बोला कि अगर इफ n इज इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो 1, तो रिटर्न कर दो 1। ये हम लोग की बेस कंडीशन हो जाएगी। बेस कंडीशन कैसे निकालना है? स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। ठीक है, 0 क्यों नहीं लिया? 0 लिखते तो क्या होता है? n इज इक्वल टू 0, तो 0 प्रिंट कराते हैं, तो 0 बोला नहीं था, 1 to n बोला था, है ना? तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट हम लोगों ने लिया 1। कोई बस सिंपल सा कोड हो गया। कोड क्या हो गया? अगर मुझे प्रिंट कराना है, मैं वाइड फंक्शन लिख लेता हूँ क्योंकि मैं प्रिंट करा रहा हूँ, कुछ रिटर्न तो कराना नहीं है। प्रिंट कराना है और मैं इसको n पे कॉल करूँगा, फिर मैं बेस कंडीशन लिख दूँगा इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। ठीक है, फिर मैंने बोला, मैंने हाइपोथेसिस डिजाइन कर ली थी। मैंने बोला मुझे प्रिंट कराना है अगर n
प्रिंट कॉल कर रहा हूँ मैं n पे, तो वो 1 to n ला के दे रहा है। तो मैंने बोला स्मॉलर इनपुट पे मैं अगर हाइपोथेसिस डिजाइन कर रहा हूँ तो प्रिंट n-1 पे डिजाइन करता हूँ, तो ये मुझे 1 to n-1 ला के देगा। तो मैंने बोला कि बाकी काम तो ये फंक्शन n-1 कर देगा, मुझे क्या करना है, मुझे बस इंडक्शन स्टेप में इसको सही से वर्क कराना है। तो मेरे पास 1 to n तो आ गया, अब मुझे बस n और चाहिए इसके बाद में। ये n अगर कैसे भी मिल जाए तो ये फंक्शन एकदम बढ़िया वर्क करेगा। तो मैंने बोला n मैं आखिर में प्रिंट करा दूंगा। तो दिस इज माई इंडक्शन स्टेप, ठीक है। आगे बात समझ, कहाँ पर बेस कंडीशन है, कहाँ पर हाइपोथेसिस है और कहाँ पर इंडक्शन स्टेप है, आ रहा है ना समझ में। बेसिकली ये ग्रीन वाला इंडक्शन है, ठीक है, और अभी ये जो ग्रीन हो रहा है ये बेस कंडीशन है और ये हाइपोथेसिस है स्मॉलर इनपुट पे। हाइपोथेसिस बेसिकली तुम क्या डिजाइन कर रहे हो अपना फंक्शन, है ना। कूल, चलो अब इसको हम लोगों ने वैसे क्यों नहीं किया रिकर्सिव ट्री से, रिकर्सिव ट्री से भी तो कर सकते थे ना, वैसे क्यों नहीं अप्रोच किया। तो अगर हम लोग देखें इसको, प्रिंट n, ठीक है, प्रिंट अगर 7 पे है तो प्रिंट क्या कर रहे हैं, 6 पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये प्रिंट 6 क्या होगा, प्रिंट 5 पे कॉल करेगा। हम लोगों ने डिसीजन क्या लिया, कि हम लोग डिसीजन लिया कि हम लोग को जो इनपुट दे रखा है ना, हम लोग क्योंकि प्रिंट कराना है 7, ऐसे 6 प्रिंट कराना है, ऐसे पहले 5 प्रिंट कराना है, फिर 4 प्रिंट कराना है, तो ये हम लोग को प्रिंट कराना है। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, हम लोग उसको इनपुट को स्मॉल करते जाएंगे। तो ऐसा कुछ रिकर्सिव ट्री बनेगा, ऐसे 4 पे आएगा, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। तो ऐसा कुछ रिकर्सिव ट्री बनने वाला है। हम लोग क्या कर रहे हैं इस मेथड में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को लीफ नोड में पता चलता है कि एक्चुअली में कब हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि उस वक्त सबसेट वाले में था, सबसेट वाले में क्या था कि लास्ट में आते आते जो लीफ नोड होती है ना, वहाँ पर इनपुट क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता था। तो हम लोग को पता चला कि इनपुट एम्प्टी होने पे हम लोग को आउटपुट मिलने वाला है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम लोग को ये पूरा रिकर्सिव ट्री ना, हम लोग को डिसीजंस भी ऐसे भारी डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो रिकर्सन 2 तरीके के होते हैं, एक तो रिकर्सिव प्रॉब्लम होती है जो एक्चुअल में होती है, एक होती है कि रिकर्सन बेमतलब में डाल दिया इस क्वेश्चन में, रिकर्सन है नहीं, है ना। तो अच्छी जो रिकर्सिव प्रॉब्लम होती है ना, उसमें तुम्हारे पास ये रिकर्सिव ट्री से सॉल्व होती है, ठीक है, वो बिना रिकर्सिव ट्री के सॉल्व नहीं होंगी। मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब सिंपल है, फिर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, मीडियम और फिर हार्ड, है ना। तो सिंपल जो है वो ये जो मेथड मैंने करा ना IBH वाला, इससे हो जाएंगी, इंडक्शन बेस और हाइपोथेसिस। फिर मीडियम में तुमको रिकर्सिव ट्री बनाना पड़ जाएगा, और फिर हार्ड प्रॉब्लम्स में तुमको चॉइस डायग्राम बनाना पड़ जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बेसिकली ये जो अप्रोचेस मैंने बताई ना, IBH, रिकर्सिव ट्री और चॉइस डायग्राम, ये सब है एक ही चीज़ रिकर्सन। मैंने अलग अलग बना दिए हैं तरीके, ताकि सोचने में ईजी हो जाए, है ना। और ये कुछ अलग चीज़ें नहीं है, अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ ना तो ये एक ही मेथड बनेगा, ओनली वन मेथड, ठीक है। इसको अगर जनरलाइज करने बैठूँ, है एक ही चीज़, बस घुमा फिरा के मैं अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पर ताकि क्यों पढ़ा रहा हूँ ऐसा, मुझे शौक है नहीं, इसको सोचने में आसानी हो जाएगी। IBS से कभी भी तुम्हें लगेगा कि रिकर्सिव ट्री से कभी समझ में नहीं आएगा कि बन कैसे रहा है, और IBS से तुरंत आ जाएगा। ऐसे तुम्हें कभी भी चॉइस डायग्राम से तुरंत आ जाएगा। तो तुम्हारा फ्लो क्या रहना चाहिए, देखो IBS लग रहा है, नहीं लग रहा तो रिकर्सिव ट्री लग रहा है, नहीं लग रहा तो चॉइस डायग्राम लगाओ, कूल। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग रिकर्सिव ट्री ऐसा बनाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग IBS में बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि अगर प्रिंट 7 बढ़िया काम कर रहा है तो वैसे ही प्रिंट 6 काम करेगा, उसके नीचे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहे हैं हम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये जो बाकी का रिकर्सिव ट्री है ना, इस पर कभी नहीं आ रहा है ना। हम लोग बाकी का जो रिकर्सिव ट्री है ना, ये नीचे वाला, इस पर कभी नहीं आएंगे। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि रिकर्सिव ट्री यहाँ से कितना भी अच्छा रिकर्सिव ट्री है तो पूरा रिकर्सिव ट्री बना रहे थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये हम लोग का रिकर्सिव ट्री था अभी, तो हम लोग खाली एक रिकर्सन कॉल तक आ रहे हैं कि अगर ये n पे ऐसा इनपुट पे काम कर रहा है तो उसके एक स्मॉलर इनपुट पे एक लेयर नीचे आते हैं, एक हाइट नीचे आते ही वो भी वैसे ही काम करेगा। बाकी के इसको देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को लास्ट के लीफ नोड तक जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आई। तो इसमें हम लोग कैसे सोच रहे हैं, इनपुट स्मॉल करने के टर्म में, इनपुट स्मॉलर के टर्म समझ में आ रही है ना। इनपुट स्मॉलर क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट बना, कभी कभी डिसीजंस सोचने में नहीं बनता है तो तब इनपुट स्मॉलर सोचने को बन जाता है, ठीक है। चलो अच्छा, एक और बात, वो जो मैंने पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, 1 मिनट रुको, मैं जरा वो लिस्ट खोल लेता हूँ। ओके, सो ये रही लिस्ट, है ना। You're not going to want to hear this, but if you want to start a business at 19, things are going to get messy. तो इसमें ये जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, इसमें जितने भी रेड से जितने भी क्वेश्चन है ना, ये प्रिंट 1 to n हो गया, ये सॉर्ट स्टैक हो गया, ठीक है, और ये सॉर्ट एन एरे हो गया, डिलीट मिडल एलिमेंट इन अ स्टैक, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम ए स्ट्रिंग, और नंबर ऑफ अकरेंसेस भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ अकरेंसेस निकालना है यूजिंग स्टैक, है ना, और यूजिंग रिकर्सन, सॉरी। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, जो भी मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन हम लोग किससे सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ है तो नंबर ऑफ अकरेंसेस, सॉरी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं IBS से, ठीक है, IBS से सॉल्व करेंगे। कुछ ये जितनी भी रेड से हाईलाइट करें मैंने, ये सारे IBS से सॉल्व होने वाले हैं। बाकी बचे हुए जो है वो हम लोग, उसके लिए हम लोग ये रिकर्सिव ट्री बनाएंगे, उसके लिए हम लोग इनपुट आउटपुट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर ख़त्म करूँ, है ना। अभी मैंने हार्ड में और प्रॉब्लम सोच रहा हूँ कि क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम लेंगे, पर हम लोग पहले बेसिक क्लियर करेंगे। ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ईजी लग रही होंगी और तुमको लग रहा होगा इसकी ज़रूरत है भी क्या 1 to n की, क्योंकि 1 to n तो बेसिकली लूप से भी हो जाएगा।
और ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये रिकर्सन को फाउंडेशन है यार, ये रिकर्सन कैसे समझो, बस ये रिकर्सन की फाउंडेशन है। अगर ये सब नहीं करेंगे ना तो रिकर्सन दिमाग में घुसेगा नहीं अच्छे से। मैं पढ़ा तो यहाँ से भी सकता हूँ, सीधे सही बता रहा हूँ, यहीं से पढ़ा सकता हूँ मैं, पर यहाँ से पढ़ाना सही नहीं रहेगा क्योंकि फाउंडेशन अगर बेकार है ना तो भाई ऊपर कितना बड़ा घर बना लो गिरेगा। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। वापस अपने इसी पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से समअप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला, जल्दी से समअप करते हैं कि हम रिकर्सन को अप्रोच करने की 3-4 मेथड होनी चाहिए। 3-4 मेथड हैं, तो तुमको कैसे सोचना चाहिए, पहले IBS सोचो कि यहाँ पर इंडक्शन, बेस और हाइपोथेसिस से काम चल रहा है, नहीं चल रहा है फिर तुम रिकर्सिव ट्री बनाना की सोचो, ठीक है। रिकर्सिव ट्री बनाने के लिए इनपुट आउटपुट मेथड लगाओ जो मैंने बताया, और उसके बाद ही समझ में नहीं आ रहा तो चॉइस डायग्राम सोचो। चॉइस डायग्राम का नहीं आता पता है तुमको, चॉइस डायग्राम बेसिकली क्या है, कभी कभी जो DBB कोई क्वेश्चन होता है ना, आगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते रिकर्सन उनमें यूज़ होता है ना। तो ये सब कुछ इंटरनेट पर नहीं है, ये सब मेरी बनाई हुई टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, ये मेरे टर्म्स हैं, ठीक है। और बेसिकली ये अप्रोच होनी चाहिए तुम्हें सोचने के लिए। ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन पे लेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, है ना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा कि IBS से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, और अभी हम लोग सबसे पहले IBS पिक करेंगे, जो इजी क्वेश्चन है उनको खत्म करेंगे, उसके बाद मीडियम पे आएंगे और फिर हम लोग चॉइस डायग्राम के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कूल, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक्स। और हाँ, इसका कोड और नोट्स वगैरह पेट्रियन पेज पे मिल जाएंगे, टियर पे नोट्स एंड कोड करके एक टियर है, उससे मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। It's still me against the world, free speech without reserve. It's still me against the church. There is demons in my words. When I'm dreaming up a verse, I can... तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्यूटी ऑफ द हाइपोथेसिस एंड इंडक्शन, है ना। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें रिकर्सन से प्यार आ जाएगा, एकदम बढ़िया वाला। तो क्या करना है, अच्छा पहले तो मैं ये बताता हूँ, पिछले वीडियो में ये जो कोड लिखा था मैंने, है ना, तो इस कोड में मैंने यहाँ पर रिटर्न 1 कर दिया था, है ना। दैट वाज अ सिली मिस्टेक, ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वॉइड फंक्शन है, तो बेसिकली प्रिंट 1 करना है फिर रिटर्न करना है, प्रिंट n करना है फिर रिटर्न करना है, तो ये हम लोगों को ये करना है। तो अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो करेक्शन कर लेना, तो अगर सही लिखा हो तो बढ़िया ही है ना। चलो फिर इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे हाइपोथेसिस कैसे वर्क करता है और इंडक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या करेक्शन किया था, 1 to n प्रिंट कराया था। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, तुम लोगों को इससे समझ में आएगा कि हम लोग जो ऐसे प्रिंट फंक्शन लिखा था हम लोगों ने, तो जैसे हम हाइपोथेसिस स्टेज में जैसे ही हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, ये फंक्शन ये काम करने वाला है, ऐसे कुछ ये काम करने वाला है, तो ये डिसाइड हो जाता है उसका सिग्नेचर। उसका सिग्नेचर हमने एक बार डिसाइड कर दिया ना, तो फंक्शन वही काम करेगा, है ना। अब कैसे देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने 1 to n प्रिंट कराया, ठीक है, राइट। इस वीडियो में लेट्स ट्राई टू प्रिंट n to 1। एक बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो हम लोगों को ब्यूटी समझ में आएगी रिकर्सन की, कैसे काम करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या प्रिंट कराना था, पहले हम लोगों ने कराया 1 to n प्रिंट, और अभी हम लोग करा रहे हैं n to 1 प्रिंट, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने पहले 1 to n में क्या करा था कि प्रिंट n पे कॉल किया था और बोला था कि ये 1 to n ला के देगा। फिर मैंने बोला ये हाइपोथेसिस डिजाइन करने के टाइम पे किया था, फिर मैंने बोला इसी को सिमिलर अगर मैं n-1 में करूँ तो इसी डेफिनेशन से ये 1 to n-1 ला के देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्यूटी समझो, अब मुझे यहाँ पर n to 1 प्रिंट कराना है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने फंक्शन, इस बार मैं फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, हाइपोथेसिस स्टेज में अपनी फर्स्ट स्टेज क्या होती है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हाइपोथेसिस डिजाइन करो कि सिग्नेचर क्या होना चाहिए हमारे फंक्शन का, ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि प्रिंट अगर मैं n पे कॉल करूंगा तो इस बार ये 1 to n पहले ला के दे रहा था ना, इस बार 1 to n नहीं, इस बार n to 1 ला के देगा, ठीक है। फिर मैंने बोला अगर इसी सेम मैं सिमिलरिटी देखूँ कि ऐसा ये काम कर रहा है, तो ये n to 1 ला के दे रहा है, तो ये n-1 अगर मैं इसको n-1 पे कॉल करता हूँ इस बार, तो ये n-1 to 1 ला के देगा, ठीक है। अब मुझे प्रिंट कराना है क्या, मुझे प्रिंट कराना है, अगर मान लो n = 7 है, तो मैंने क्या बोला कि प्रिंट 7 अभी अपना इस बार क्या कर रहा है कि 7 to 1 ला के देगा, ठीक है। तो मैंने बोला प्रिंट 6 क्या करेगा, 6 to 1 ला के देगा। अब मेरा काम बचा क्या, मेरा काम बचा केवल इंडक्शन स्टेप में ये लिखना कि यहाँ पर मुझे पता है कि अगर जैसे ही मैं अगर n पे कॉल करूँगा तो मुझे 7 to 1 आएगा, मैं n-1 पे करूँगा तो मुझे n-1 to 1 आ जाएगा। तो मेरा काम बचा बस मुझे इसके आगे 7 और प्रिंट कराना है। अगर मैं ये 7 प्रिंट करा लूँ तो मुझे ये प्रिंट तो ये ला के ही दे देगा। तो इंडक्शन स्टेप में क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैंने प्रिंट कॉल करा है तो वॉइड फंक्शन बनाया मैंने प्रिंट n पे, राइट। बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन सिमिलर है क्योंकि हम n to 1 कर रहे हैं, लास्ट में क्या नंबर आ रहा है 1, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट है 1, तो वैसे यहाँ पर कर देंगे इफ n = 1 तो सी आउट कर देंगे n, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे। कूल, मैंने बोला प्रिंट n है, तो मैंने क्या बोला कि भाई प्रिंट n जो काम करता है वो क्या करेगा, वो n-1 ऐसे करते करते 1 तक प्रिंट करेगा। जैसे 7 है तो 7 6 5 4 3 2 1 प्रिंट करेगा। तो प्रिंट n-1 क्या करेगा, वो 6 5 4 3 ये पूरा करेगा, 7 बच जाएगा। तो मैंने बोला इसमें तो मैं ये काम कर दूंगा कि n-1 कॉल कर दूंगा, तो मुझे अगर 7 to 1 यहाँ पर प्रिंट कराना था तो ये तो 6 to 1 प्रिंट करा के दे देगा। और उससे पहले मुझे एक काम करना है कि बस यहाँ पर 7 प्रिंट करना है, तो इससे पहले मैंने लिख दिया सी आउट n, राइट।
इतना सा काम किया। आ रही बात समझ, कुछ भी टिपिकल कोड नहीं है। अब ब्यूटी समझो, पुराने कोड में इस वाले कोड में डिफरेंस क्या है। पहले वाले कोड एक सेकेंड। थोड़ा लग आता है काफी। कोड में भी प्रिंट फंक्शन था, वो एकदम सेम। उसमें हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन को डिफाइन किया था 1 to n लाने के लिए, यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया n to 1 लाने के लिए। बस डिफरेंस क्या है, तुम हाइपोथेसिस तुम कैसे भी डिजाइन कर सकते हो, हाइपोथेसिस जो है वो कैसे भी डिजाइन कर सकते हो। डिफरेंस क्या पड़ेगा हाइपोथेसिस को वर्क कराने में, कहाँ पर, जब मेनली तुम आओगे इंडक्शन स्टेप में। तो इसमें जो डिपेंड करता है, तो इसमें क्या कोड लिखने वाले हो वैसा ही तुम्हारा फंक्शन रन करेगा। तो बस हम लोगों ने इतना सा चेंज करा, ये जो कोड था ना ये पूरा कोड सेम है, बस इतना सा चेंज किया, ये जो सी आउट ये है ना, इसको हम लोगों ने प्रिंट के पहले लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया इस बार इसको, है ना। और इतना करने से अब प्रिंट हो रहा है n to 1, और इसको अगर तुम नीचे लिख रहे थे यहाँ पर ये पहले था, तो वहां पर प्रिंट हो रहा था क्या 1 to n। देखो ड्यूटी समझ में आ रही है, ड्यूटी समझ में आ रही है कैसे, कितना एक स्टेप से पूरा रिकर्सिव फंक्शन की कैसे पूरी चेंज होगी कॉल। ठीक है, फिर जल्दी से समअप कर लेते हैं। ठीक है, समअप कर लेते हैं फटाफट। हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले हाइपोथेसिस डिजाइन करो, तुम्हारा फंक्शन है, इट्स योर फंक्शन, है ना, कि तुम जैसे डिफाइन करोगे वो वैसे वर्क करेगा। और उसको वर्क कराने के लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तुम इंडक्शन स्टेप सही लिखो। तो एक फंक्शन प्रिंट है, उसी फंक्शन को तुम बोल सकते हो कि ये 1 to n भी प्रिंट करा सकता है, और इसी फंक्शन को बोल सकते हो ये n to 1 भी प्रिंट करा सकता है। डिपेंड करता है तुम इंडक्शन कैसे लिखोगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन तुम करना। चलो एक क्वेश्चन तो कर ही लेना, फैक्टोरियल, है ना, फैक्टोरियल का क्वेश्चन करना जाके। मैं ले नहीं रहा, बहुत लोग पाल चुके हैं यूट्यूब पे, है ना, फालतू फालतू क्वेश्चन नहीं ले रहा फालतू के, पर हाँ ये इंडक्शन हाइपोथेसिस डिजाइन करने के तरीके से सोचना और ये करके देखना, काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, अभी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं हम लोग, तो फिर खत्म करते हैं वीडियो। थैंक्स। अच्छा, इसके नोट्स और इसका कोड वगैरह मिल जाएगा पैट्रियन पेज पे। कूल, थैंक्स। It's still me against the world, free speech without reserve. It's still me against the church, there is demons in my words. When I'm dreaming up a verse, I can... सो हाय अगेन। तो ये वीडियो मैंने क्यों लिया है, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, है ना, ये सिंपल सा वीडियो है मैंने तुम्हें दिखाने के लिए कि कितना अच्छे से ये जो मेथड हम लोगों ने सीखा ना IBH, ये ट्री वगैरह पे कितने अच्छे से अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो फ्लो क्या रहने वाला हम लोग का। अगर अच्छा एक और बात बिफोर आई स्टार्ट, कि अगर तुमको ट्री की कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है तो तुम्हारा मन है तो देख सकते हो, नहीं तो स्किप कर दो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है यार, है ना। बाकी वीडियो देखेंगे हम लोग, इसके जिनको पता है ना उनको बस बताने के लिए कि भाई हाँ ट्री पे बहुत ईजी से सोच सकते हो तुम ट्री का कोई भी सोल्यूशन, है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ना। तो अभी क्या है कि सबसे फ्लो क्या रहने वाला है हम लोग का, कि हम लोग पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, फ्लो देखो, हाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, इनपुट आउटपुट देखेंगे, फिर डिजाइन करेंगे IBH और फिर कोड देखेंगे। ठीक है, कूल। एक ट्री बना लेते हैं क्योंकि ट्री की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा कुछ ट्री बना लिया मैंने। ठीक है, तो अब बेसिकली ये हम लोग का ट्री है। अब इसमें हाइट कैसे डिफाइंड है, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोला है कुछ हाइट होता है, बाइनरी ट्री की कुछ हाइट होती है। हाइट क्या होता है, ये देखो इसकी हाइट सिंपल है, इसको समझाने से अच्छा क्या है बना लो। इसकी हाइट क्या है, हाइट किसी भी ट्री की निकालनी है तो ऐसे लाइन बना दो नोट पे, 1 2 3 और 4, तो इसकी हाइट आ जाएगी 4। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 और 4 5 6, है ना। अभी देखो इसकी हाइट निकालनी तो इस पर एक नोट एक लेयर होगी ना, ये सेकंड लेयर होगी 3 4 और 5, तो इसकी हाइट आ जाएगी 5। कूल, मतलब ऐसे कि ऐसा समझ लो कितने लेयर ये डीप है, कितनी लेयर्स ये डीप है, तो ये निकालना सिंपल है। हाइट हम लोग को निकालनी है।
अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब मुझे इसके लिए इनपुट क्या है, इनपुट में हम लोग को ये रूट नोड दे रखे होगी, ठीक है। बेसिकली मैं साफ साफ ही बोलता हूँ, अगर तुमको नहीं समझ में आता है ट्री, तुम लोग पता नहीं है ट्री होता भी क्या है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, स्किप कर दो भाई, तो आता है तो देख लो आराम से, कोई चक्कर वाली बात नहीं है ना। अब इनपुट और आउटपुट देखते हैं। इनपुट में लेट से हम लोग को एक फंक्शन दे रखा है ना, हम लोग ये फंक्शन देखा है जिसकी जो हम लोग को हाइट रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो हम लोग को दे रखा है इंट हाइट नाम का फंक्शन, जिसमें कि हम लोग को एक नोड है, एक ये जो रूट नोड है वो हम लोग को दे रखी है, ठीक है। तो हम लोग को ये फंक्शन में इनपुट में क्या है, ये नोड दे रखी है, ये जो रूट नोड है ये वाली, ये रूट है, तो ये दे रखा है। हम लोग को इसकी हाइट रिटर्न करनी है, तो हम लोग को बेसिकली एक इंटीजर रिटर्न करना है, ऐसा कोई फंक्शन हम लोग को लिखना है। कूल। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, स्टेप 1 क्या रहना चाहिए, हम लोग को हाइपोथेसिस डिजाइन करनी है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस कैसे डिजाइन करूँगा, तो मैंने बोला ये जो फंक्शन हाइट है ना, ये अगर मैं जिस भी नोड पे लगाऊंगा, ठीक है, जिस भी नोड पे मैं लगा रहा हूँ, रोड पे लगा रहा हूँ, किसी भी नोड पे लगा रहा हूँ, वो उसकी हाइट लाके देगा, ठीक है। कूल। तो जैसे कि अगर मैंने इस वाली ट्री पे यहाँ पर लगा दिया, तो इस वाले यहाँ पर अगर मैंने हाइट फंक्शन लगाया तो इस पूरी ट्री की वो हाइट लाके देगा। अभी लेट्स से मैंने इस वाले नोड पे लगा दिया है ना यहाँ पर, तो वो इस वाले पूरी ट्री की हाइट लाके देगा। मैंने कहा बढ़िया बात है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हाइट इस रूट की निकालनी है। अब मैंने बोला कि यही तुम हाइपोथेसिस डिजाइन कर ली तुमने कि तुम्हारा फंक्शन क्या काम करेगा, एकदम तुम्हारे दिमाग में पता होना चाहिए तुम्हारा फंक्शन कैसा काम करेगा। तुम यहाँ पर तुम इसको कुछ भी करवा सकते हो, है ना, इम्पॉसिबल चीज़ें भी कर सकता है यहाँ पर, ये चीज़ें तुम डिजाइन कैसे करता हूँ, कुछ भी कर सकता है फंक्शन, ठीक है। तो एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि ये फंक्शन करेगा क्या, एकदम प्रिसाइज रहो, एकदम एग्जैक्ट रहो, कंफ्यूज मत हो क्या करने वाला है, एकदम एकदम एग्जैक्टली दिमाग में बैठा लो कि अच्छा यही करेगा, फिर वो फंक्शन वही काम करने वाला है। कैसे, इसका हाइपोथेसिस का स्टेप सेकंड क्या होता है कि तुम स्मॉलर इनपुट पे इसको अप्लाई करो, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये रूट था, तो इसका स्मॉलर इनपुट क्या है, इसमें यहाँ पर इसका लेफ्ट है चाइल्ड है, इसका राइट चाइल्ड है, इसलिए ये इसके स्मॉलर इनपुट है ना। यहाँ से अगर आएंगे, पहले हम लोग ये ट्री था हम लोग के पास, तो हम लोग अगर इस पे अप्लाई कर रहे थे ना, इस वाले पे, तो ये इस पूरे ट्री का हाइट लाके दे रही थी। तो अभी हम लोग इसके स्मॉलर इनपुट पे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये इस वाले ट्री का हाइट लाके देगी, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से हाइट को ही स्मॉलर इनपुट पे, मतलब रूट के लेफ्ट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी हाइट को हम लोग रूट के राइट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्टेप सेकंड क्या होता है प्रोसेस में कि हम लोगों ने एक बार ये डिजाइन कर लिया कि फंक्शन क्या करेगा, तो उसको स्मॉलर इनपुट पे वही काम करेगा। तो ये क्या करेगा, ये हाइट ला कर देगा हम लोगों को, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। और ऐसे ये हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ठीक है। चलो, अब अपने पास क्या काम होता है कि एक बार ये डिजाइन होगा तो स्टेप सेकंड पे आ जाओ, जो कि है इंडक्शन। अब तुम जैसे इसको वर्क कराना चाहो वो वैसे वर्क करेगा। इंडक्शन में क्या करना चाहिए मुझे, देखो अगर मैंने बोला कि यहाँ पर हूँ मैं, अब मैंने बोला कि मुझे, यार एक बात बोलूं, मैंने आज कुछ देखा लिंक्डइन पे जो दिमाग में अटक गया। एक बंदा 4 साल का एक्सपीरियंस, रेजर पे में सीनियर एचडी बन गया, और जिस सीनियर को मैंने 8 साल से फॉलो कर रहा हूँ ना, सेम कंपनी में सेम लेवल पे रुका हुआ है। क्यों भाई, मैंने दोनों के कुछ ऐसा है, ठीक है। मुझे इससे हाइट मिल जाएगी, ठीक है, इससे हाइट मिल जाएगी। तो इससे लेट से हाइट क्या आ गई, 1 2 और 3, इसकी हाइट आ गई 3, यहाँ से मुझे 3 रिटर्न होकर मिलेगा। फिर मैंने बोला मुझे इससे भी हाइट निकालनी है, तो मैंने इसकी हाइट निकाली 1 और 2, तो यहाँ से मुझे 2 रिटर्न होकर मिलेगा। तो पूरी इसकी क्या हाइट होगी, पूरी ट्री की हाइट क्या होगी, जो कि इन दोनों में मैक्सिमम होगा। क्यों, इन दोनों हाइट में से जो भी मैक्सिमम होगा 3 और 2 में से। क्यों भाई, अरे सिंपल है यार, मतलब बेसिकली अगर मान लो कोई म्यूटेंट है ना, ऐसा कोई म्यूटेंट है, ऐसा कुछ जिसकी एक पैर, एक लेग जो है वो काफ़ी बड़ा है, एक छोटा है, तो इस पूरी म्यूटेंट जो भी खड़ा होगा, इस म्यूटेंट की हाइट क्या होगी, इस म्यूटेंट की हाइट वही होगी ना जो इसका बड़ा वाला पैर होगा। सिंपल सी बात है यार। अच्छा कुछ नहीं तो जर्नी टू द वेस्ट देखिए, जर्नी टू वेस्ट देखिए, उसमें एक बंदा है जिसका बड़ा सा पैर है, या फिर मंकी किंग देखिए, नहीं देखिए तो देखना, उसमें एक बंदा है जो बड़ा सा पैर है इसका। बेसिकली जो भी इसमें दोनों का पैर होगा बड़ा, सिंपल से उसकी हाइट वही आएगी। तो इस वाली ट्री में भी वही फंडा है, जो भी इसमें बड़ा है उसकी हाइट पूरी ट्री की डिफाइन कौन सा करेगा, जो भी इसमें बड़ा है। तो इंडक्शन स्टेप में क्या है, जब मुझे एक बार इसकी हाइट मिल गई, मैंने बोला ये जो लेफ्ट की हाइट है इसको मैं स्टोर कर लूँगा लेफ्ट वेरिएबल में, और जो राइट की हाइट है इसको मैं राइट वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। तो इन दोनों की हाइट के अलावा जो भी 3 आई यहाँ से और यहाँ से 2 आई है ना, तो अब इस पूरी ट्री की हाइट क्या होगी, इन दोनों में से जो भी आया उसमें +1 और, क्योंकि ये तो ये लेयर होगी ना 1 2 और 3, अब एक लेयर और है तो +1 और करना है। बेसिकली इंडक्शन स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, इंडक्शन स्टेप में रिटर्न करना पड़ेगा 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ जो लेफ्ट की हाइट है LH मान लेते हैं और राइट की हाइट है RH मान लेते हैं। तो ये इंडक्शन स्टेप हो गया। अच्छा बेस कंडीशन क्या है, अब स्टेप 3 पे आ जाते हैं। स्टेप 3 क्या है हम लोग का, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या है कि स्मॉलेस्ट इनपुट, तो हम लोग पास जैसे ये एक ट्री है ना, और स्मॉल कर लेते हैं, एक ही लीफ 2 छोड़ते हैं खाली, और स्मॉल कर लेते हैं, एक ही नोड छोड़ते हैं। अभी भी इसकी हाइट क्या है, मतलब देखो अभी भी इसकी हाइट 2 थी, इसकी हाइट क्या है, अभी भी 2 है, इसकी हाइट क्या है 1 है। इससे स्मॉल करते हैं तो इससे स्मॉल क्या है, नल, कि अभी तुम्हारे पास ये जो है ये नल को पॉइंट कर रहा है, कोई रूट ही नहीं है, तो अभी इस पर लाइन नहीं खींच सकते। तो जब भी ये नल है ना, बेसिकली मैंने क्या बोला था, थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट,
तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या होगा, यहाँ पर सब लोग क्या पॉइंट कर रहे हैं, रूट ऐसा होता है ना ट्री, तो आखिर में ये नल को पॉइंट करता है, पता है ना, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में ये नल को पॉइंट करता है। तो स्मॉलेस्ट ट्री क्या होगा, जो नल होगा। तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या हो सकता है, नल। तो जब भी नल है तो हाइट क्या है, यहाँ पर अगर एक भी नोड है तो हाइट क्या आ रही है, 1 आ रही है ना, तो नल है तो हाइट क्या आएगी, 0। सिंपल है, कोड लिख लेते हैं। आई होप अभी तक तो सब समझ में आ ही रहा होगा, कुछ भी टिपिकल नहीं लिखा। तो मैंने बोला क्या, क्योंकि हम लोग को रिटर्न करना है कुछ, तो हम लोग को इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, इंट रखेंगे। फंक्शन का नाम रख दिया हाइट, इसमें नोड स्टार रूट आ गया। फिर मैंने बोला कि इफ रूट इज इक्वल टू नल पॉइंटर या फिर नल, तो रिटर्न कर दिया 0। ठीक है, कूल। क्योंकि अगर नल है, यहाँ पर अगर ऐसा भी होगा तो 2 लेयर बन रही है, अगर एक होगा तो भी एक लेयर बन रही है, पर नल है तब जाकर रिटर्न 0 होगा। फिर मैंने बोला कि अब मैं अपना हाइपोथेसिस स्मॉलर इनपुट पर लगाऊंगा। उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने बनाया एक वेरिएबल इंट LH लेफ्ट हाइट, जिसमें मैंने हाइट को ही कॉल करा किस पे, रूट के लेफ्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और वेरिएबल बनाया इंट RH राइट हाइट, जिसमें मैंने हाइट को रूट के राइट पार्ट पे कॉल करा। कूल। फिर मैंने बोला अब मेरे पास इंडेक्शन स्टेप लिखना है, मुझे यहाँ पर इंडेक्शन स्टेप लिखना है। वो क्या होगा, बेसिकली रिटर्न करना है, मुझे कुछ रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करूँगा, 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ LH और RH। क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि बेसिकली जो भी इसका बड़ा सब ट्री है, ये ज़्यादा बड़ा है और ये इतना सही है, तो इसमें जो भी है ना, तो वो हाइट किससे डिटरमाइन होगी, बड़े वाले से। सिंपल है। अगर मान लो ये ट्री है, कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, तो यहाँ से हाइट आ रही है 3, यहाँ से हाइट आ रही है 2, तो इस पूरी सब ट्री की हाइट क्या होगी, ये हाइट एक लेयर और जुड़ जाएगी, ये वाली लेयर, प्लस इसमें से जो भी मैक्सिमम होगी वहाँ तक जाएगा ना, नीचे तक। तो ये इसलिए हम लोगों ने 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ LH प्लस LR किया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कितना ईजी था ये। अगर हम लोग IBH मेथड से करते हैं, तो IBH मेथड ना लिंक लिस्ट वगैरह में और ट्री वगैरह में बहुत अच्छे से काम आता है। ठीक है, मैंने क्यों पढ़ा दिया ट्री, मैं बेसिकली अभी क्या है, रिकर्सन, केवल रिकर्सन पिक करने को, रिकर्सन को मैं प्योरली रिकर्सन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली मिक्स नहीं करना चाहता चीज़ें। ठीक है, पर मैंने पढ़ा दिया ताकि तुम लोग थोड़ा सा अप्रोच खुद से कर सको, बाकी खुद आराम से चल सको आगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि IBH कहाँ कहाँ लग सकता है। ठीक है, थैंक्स। और हाँ, इसके नोट्स प्लस कोड जो भी है वो पैट्रियन पेज में मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय। It's still me against the world, free speech without reserve. It's still me against the church, there is demons in my words. When I'm dreaming up a verse, I can... AI is changing the game for app development. Firebase is here to help. We offer a तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट एंड एरे करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या खास बात है, यूजिंग रिकर्सन करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग रिकर्सन पढ़ा है ना। अच्छा, तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये क्या करा रहे हो, 1 2 शॉर्ट अरे यूजिंग रिकर्शन, ये कैसे होगा? पहले तो फंक्शन आ रहे थे। शॉर्ट कैसे करेगा ये, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स पास कर दूंगा तो शॉर्ट कर देगा नहीं, फर्स्ट लास्ट इंडेक्स। Until my start is greater than my last index, maybe next, maybe next index. If my start index is going to be array of first, then my array dot length, until then you do this.
array of I, array of first is greater than my array of next. Wait a minute. पहले next आएगा, फिर next में first आएगा, first में next आएगा, and जब तक ये है, जब तक ये swapping वगैरह होता है, सही है। Lima. apa masa nggak खीर पूरी दाल until my array of first is less than my array of length. Array dot length is my size of array. Until then you sort and every time passing the array. Don't know. How the fuck to do with the recursion? If my array of first is less than my array of array dot length. Wait a minute. Array of first and array of first and array of next should be रिकर्शन में कैसे लिखते हैं? तो एंड प्रिंट करा दिया, सॉर्ट एंड एरे करा दिया, इन सबसे क्या फायदा होगा? ये सब तो हम लोग सॉर्ट फंक्शन लगा के भी कर लेंगे, प्रिंट तो इटरेटिव तरीके से भी हो जाएगा, है ना। बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये ना ये फाउंडेशन बिल्ड करेंगे तुम्हारी रिकर्शन। ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, जिनके अल्टरनेटिव सोल्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसका भी प्रेजेंट है, इसका भी प्रेजेंट है, पर फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ें रिकर्शन से कैसे हो रही है, राइट। तो जब एक बार रिकर्शन समझ में आ जाएगा ना, एक बार बेसिकली जो चीज़ तुम्हें आती है ना, मैं एकदम न्यू प्रॉब्लम सिखाना शुरू करता हूँ तो मैं थोड़ी टिपिकल लगेगी। तुम्हें जो चीज़ आती है, जानी पहचानी चीज़ है, उसको मैं रिकर्शन से कर रहा हूँ ना, तो इतना वो कठिन नहीं लगेगा। तो इससे तुम्हारा थिंकिंग का लॉजिक ना वो ब्रॉड होगा। गुड। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो करेंगे वो करेंगे सॉर्ट एंड स्टैक, ठीक है, इसके बाद। और उसके लिए मैंने सोचा कि इसको डायरेक्टली पिक करूँ, उससे पहले एक बार सॉर्ट एंड एरे कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को एरे सॉर्ट करना भी रिकर्शन से भारी पड़ जाएगा, ठीक है, मुझे भी भारी पड़ता था भाई। हाँ चलो देखो, तो अपना फ्लो क्या रहेगा? अपना फ्लो क्या रहने वाला है कि हम लोग पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, तो सिंपली समझ में आई गई होगी। इनपुट आउटपुट समझेंगे, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि कैसे रिकर्शन से अप्रोच कर सकते हैं, एंड देन वी विल लुक इनटू द कोड, ठीक है। कोड तो पहले तो समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इनपुट आउटपुट क्या दे रखा होगा। तो इनपुट में हम लोग को एक एरे गिवन होगा, ठीक है, एक एरे ले लेते हैं 2 3 7 6 4 5 9, गुड। और फिर हम लोग को आउटपुट में ये एरे सॉर्टेड करके देना पड़ेगा, ठीक है, तो सॉर्ट करके देना पड़ेगा, मतलब 2 3, ठीक है, उसके बाद 4 है, 4 आ गया, 5 है तो 5 6 7 एंड देन 9, ठीक है, cool। तो हम लोग ये एरे आउटपुट में देना, सिंपल है। अब इसको देखते हैं कि हम लोग अच्छा कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए तुम STL का शॉर्ट फंक्शन लगा दो, सिंपल, ठीक है। अगर ये नहीं करना है, खुद से कुछ करना है, तो मर्ज शॉर्ट लगाओ,
ठीक है। एन लॉग एन में बेसिकली कुछ भी है तो एन लॉग एन में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हम लोग देखते हैं रिकर्सन से कैसे करेंगे इसको, ठीक है। बेसिकली रिकर्सन से इससे ज़्यादा कम्प्लिसिटी रहेगी, एन लॉग एन में नहीं होगा, पर हम लोग अभी वो नहीं है कम्प्लिसिटी है, वही टाइम कम्प्लिसिटी पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग टाइम कम्प्लिसिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग का ध्यान केवल फोकस किस पे, रिकर्सन पे, ठीक है, कि रिकर्सन से कैसे होगा। How the economic machine works in 30 minutes. The economy works like a simple machine. अभी कैसे स्टार्ट करता हूँ मैं, चलो देखो, अगर एरे यहाँ पर दे रखा है हमको 2 3 7 6 4 5 और 9, ठीक है। अच्छा, अब तुम सोच रहोगे अब इसमें कुछ डिसीजन समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला कि अगर मुझे कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम दे रखी है, अच्छा पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे रिकर्सन की, है ना, तो चॉइसेस एंड डिसीजंस, ठीक है। अब बेसिकली इसमें तो कुछ भी, इसमें तो सीधा सीधा लिखा ही है कि सॉर्ट एन एरर यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। मैं बोला यूजिंग रिकर्सन, तो इसमें सीधा सीधा लिखा है, यहाँ सीधा सीधा लिखा हो तो समझिए ना, ये रिकर्सन की प्रॉब्लम है, लिख रखा है भाई बंदे ने, ठीक है। तो जहाँ पे भी मेरे को रिकर्सन की प्रॉब्लम दिखेगी उसको मैं दो तरीके से करने का सोचूंगा। पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम क्या है कि मैं देखूंगा कि डिसीजंस कुछ ले पा रहा हूँ क्या मैं, और अगर नहीं ले पा रहा हूँ, प्राइमरी चीज़ ये है, फिर मैं स्मॉलर इनपुट की सोचूंगा कि इनपुट को कैसे स्मॉल करा जाए। तो अभी मैं इसमें सोच रहा हूँ कि मुझे इसको किस में चेंज करना है, बेसिकली 2 3 4 5 6 7 और 9 में चेंज करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं डिसीजन सोच रहा हूँ, ठीक है। तुम भी सोचना, तुमको समझ में आया तो बढ़िया है, डिसीजन से करना, पहले डिसीजन से करना। पर मैं सोच रहा हूँ ये ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं लग रहा मुझे कि इसमें मैं क्या डिसीजन लूँ कि ये कुछ ऐसा चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब मैं सोचता हूँ स्मॉलर इनपुट की, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, तभी ये स्मॉलर इनपुट इतना फेमस हो गया है, सब लोग बोलते हैं रिकर्सन में क्या करना है, स्मॉल इनपुट करना है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, मेकिंग कॉल्स ऑन स्मॉलर इनपुट, ये सब जो बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी कभी डिसीजन सोचना इतना ईजी नहीं रहता है, स्मॉलर इनपुट हर कोई सोच लेता है, ठीक है। तो आते हैं, पर डिसीजन प्राइमरी चीज़ यही है, और मैं हमेशा चाहता हूँ तुम इससे अप्रोच करो, नहीं तो कभी कभी स्मॉलर इनपुट सोचते रह जाओगे और तुम इसको अप्रोच नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिसीजन नहीं बताऊंगे क्या लेने, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि एरे को मुझे सॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैं पहले अपनी हाइपोथेसिस तैयार करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कि रिकर्सन कोई भी प्रॉब्लम करूँगा, रिकर्सिव प्रॉब्लम, तो रिकर्सिव प्रॉब्लम को मैं दो तरीके से करूँगा, बता दिया। डिसीजन होगा तो मैं रिकर्सिव ट्री बनाऊंगा, और डिसीजन प्रॉब्लम नहीं होगी और इनपुट स्मॉलर इनपुट प्रॉब्लम होगी, स्मॉलर इनपुट प्रॉब्लम जैसे कि यहाँ पर है, तो मैं अपना जो टेम्पलेट है ना रिकर्सन का वो लिखूंगा, बेस कंडीशन, हाइपोथेसिस एंड देन इंडेक्स, ठीक है। कूल। तो सबसे पहले मैं बेस कंडीशन सोचता हूँ कि इसमें बेस कंडीशन क्या लिखूंगा, और बेस कंडीशन भी तुम्हें इस पर डिपेंड करती है हाइपोथेसिस पे कि तुम अपना शॉर्ट फंक्शन डिजाइन कैसे कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या, बेस कंडीशन को सोचने से पहले सोचो हाइपोथेसिस, तुम्हारे बेस फंक्शन काम कैसे करेगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ मेरा फंक्शन होगा शॉर्ट फंक्शन, ठीक है। कूल। अब शॉर्ट फंक्शन होगा किसी एरे पे लगेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला कि शॉर्ट फंक्शन है, किसी एरे पे लगेगा, मेरे पास एक एरे गिवन होगा, तो वो एरे मेरे पास गिवन है 2 3 7 6 4 5 एंड 9। कूल। फिर मैंने बोला ये जो एरे पे लगेगा, अब मुझे इनपुट स्मॉल करना है, तो मुझे ये पूरा एरे सॉर्ट करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर दूंगा इस एरे। अबे सॉर्ट हो गया तो फिर फालतू का क्यों चलेगा, सॉर्ट एक बार चलेगा तो सब सॉर्ट हो जाएगा पे या फिर वेक्टर पे जो भी दे रखा है एरे या वेक्टर, अब मैं ये लास्ट वाला हटा दूंगा, ये 9 हटा दूंगा, और मैं बोलूँगा ये सॉर्ट करके देगा 2 3 7 6 4 और 5, ठीक है। मैंने बोला 9 को छोड़ो, तो मुझे इतना आगे का सॉर्ट करके देखो, स्मॉलर इनपुट पे कर दिया, ठीक है। अब मैं आउटपुट सोच लेता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मेरी हाइपोथेसिस में मैंने शॉर्ट फंक्शन क्या डिजाइन किया कि अगर मैं शॉर्ट फंक्शन 2 3 7 6 4 5 9 एरे नहीं बना रहा हूँ, एरे है ना, ठीक है। बार बार ये क्या डिजाइन बनाऊँ मतलब मैं, maximum constant exceed her as known already. Linear traversing only, even if fixed passing back to the function without resetting, means algorithm only scans exactly once, leaving no sense of ah shit. What the fuck is this? Insert क्यों?
Am I n is less than my 1 then returning array? Bro. The frick is this? तो ये चलेगा. Damn, it did sort. So, how the fuck is this working? Boundary less than equals to my and return array. My next. This is going to be first step. There's a boundary, then we are swapping. Oh, okay. So I don't want to swap double times until my boundary is less than equals to. And the boundary is less than equals to 1. Then my array is. And my next index is should be less than equals to my array dot length. If it is true, then we are going to swap it here and then move that inside the sort one. Then my logic was right, but I mean the thought process was right, but the solution was wrong. The base condition was fucked up. This was right. Look at this array first index. Anyways, we are not going to change my array's boundary, which is going to stay as array dot length. In my array dot I forgot to add that thing. If my array dot length is less than equals to 1, then this was a base condition. If I do, I'm going to get the wrong answer, but still it will, since we have a base condition to stop it. It says maximum cost stack exceeded. I see. Like, so I have to pass my even the length of that thing also inside my system. Why do I need to pass my array's length since I can get from the array itself? Now I can ask it. What is wrong?
Why not? Why now it will? Maybe even the single thing, man. I'm running it wrong. The fuck? This is supposed to be recursive function, right? Can't we get the boundary? The fuck? Uh, always own box shrinking. Now I'm boundary defining is one, then it is in my idea, right? It is only check if my bound is a bound. It is only check if my if this is true, then check if my is first value is the then there is not much work happening there and after now it still complains. Maybe I need to pass a value somewhere. Maybe I don't even have to. What the maybe I have to assign a default value there. I did that for like 0, 1 on this work. Boundary is going to be my array dot line. Will it work now? Fuck you. What the hell is wrong? It's literally same. If my boundary is less than this, I'm going to return a whole array. And if my next is I literally do the same thing, bro. What the fuck are you saying? It's a boundary somewhere. Rather than bro. Okay. So that is what we are doing comparing. If my boundary, next is less than the boundary. You want me to return inside on curly braces? Okay. See, if this is true, you're going to do this, and if boundaries equals to this, we are going to exchange. And for sorting, we are doing the same thing. What the fuck? Why it's not working? Is my swapping wrong? First index. Bruh, this is 100% right.
The fuck is saying? Trying to say. But I don't even have the thing here. Like, what the fuck? If this is true, then I'm not just saying inside. And we have an air condition. Shit. Shit. Boundary shrinking. Boundary got shrink so all out of the stack. But let work now. I had to only include this thing. Fuck. This is अब देखो ये मुझे अगर मैं इस पर सॉर्ट फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 3 4 5 6 7 9 ठीक है मुझे ये मिलेगा। तो मैंने हाइपोथेसिस अपनी क्या डिजाइन करी कि मुझे सॉर्ट फंक्शन अगर मैं इस पे कॉल करता हूं तो मुझे ये मिलने वाला है। तो अगर मैं सॉर्ट फंक्शन इसके लास्ट एलिमेंट को हटा के कॉल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये एरे सॉर्टेड मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, मुझे ये एरे सॉर्टेड मिलेगा। कूल। अब ऐसे अब मेरा काम क्या होना चाहिए, इंडेक्शन स्टेप पे बाद में आते हैं, एक मिनट रुको। अब पहले इंडेक्शन स्टेप आने से पहले एक बार बेस कंडीशन सोच लेते हैं। बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए? अब बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए बेसिकली, Your manager knows AI tools, your vice president knows AI tools, your CEO knows AI tools, and you don't. Then do the math and guess whose name is going to appear on next layoff list. बेस कंडीशन को इस तरीके से होनी चाहिए कि अब स्मॉलर इनपुट क्या होगा। यहाँ पर इनपुट क्या है, इनपुट है एरे, ठीक है। हम लोग किसको छोटा कर रहे हैं, हम लोग छोटा कर रहे हैं साइज ऑफ एरे को, ठीक है। बेसिकली अगर हम एरे को कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एरे को कर रहे हैं, पर अगर हम मोर प्रिसाइसली बोले तो हम लोग क्या साइज रिड्यूस कर रहे हैं एरे को, साइज रिड्यूस कर रहे हैं एरे का, सॉरी, है ना। बेसिकली हम साइज रिड्यूस कर रहे हैं एरे का। तो मैंने क्या बोला, बेस कंडीशन सोचने के लिए यहाँ पर ये सोचो कि साइज क्या हो सकता है, साइज मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ, ठीक है। और यहाँ पर साइज मान लो n अभी है, हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, n से n-1 पे आ रहे हैं, फिर n-2 पे आ रहे हैं, करते करते हम लोग 0 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इधर तो इनवैलिड इनपुट शुरू हो जाएगा क्योंकि साइज क्या होता है, पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, कुछ। तो अभी यहाँ पर तो इनवैलिड इनपुट शुरू हो जाएगा। तो मैंने बोला थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट को सोचो, ठीक है। तो वो यहाँ तो यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगी बेस कंडीशन, ठीक है। तो अगर ये सोचो कि अब मैं सॉर्ट इस पे कर रहा था पहले, कुछ मतलब मान लो 2 5 4 पे कर रहा था, तो मुझे सॉर्ट होके ये मिल जाएगा 2 4 5। फिर मैंने बोला इसको मैं एक रिड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं सॉर्ट कर रहा हूँ इस पे 2 और 5 पे, तो मुझे 2 5 मिल जाएगा। मैंने एक रिड्यूस और कर रहा हूँ, तो मैं सॉर्ट कर रहा हूँ अभी 2 पे, तो मुझे 2 मिल जाएगा। अब इसको रिड्यूस करने की जरूरत है नहीं, मतलब बेसिकली अगर तुम्हारे सॉर्ट फंक्शन में जब एरे खाली वन सिंगल एलिमेंट एरे बचा है तो वो खुद ही सॉर्टेड हो जाएगा। देखो एरे सिंगल एलिमेंट एरे है, 2 लिखा है इसमें, तो ये अपने आप में इंक्रीजिंग है, ये अपने आप में डिक्रीजिंग है, ये अपने आप में सॉर्टेड है, और भी बहुत सारी चीज़ें है ना। सिंगल एलिमेंट जो है ना वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सॉर्टेड, ये सब चीज़ें रिलेटिव है। इनके साथ कोई और चीज़ होगी, 2 के साथ 3 तो इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। ऐसी ही सारी चीज़ें ना, 2 के साथ अगर 5 लिखा है तो सॉर्टेड है, ये सारी चीज़ें रिलेटिव है। जब सिंगल एलिमेंट आता है ना तो इन सारी रिलेटिव चीज़ों का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, ठीक है। सिंगल एलिमेंट सॉर्टेड है। बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं, बेस कंडीशन मैंने डिजाइन कर ली अपनी। बेस कंडीशन क्या डिजाइन करी कि इफ जो वेक्टर का साइज जो है अगर वो 1 हो जाता है तो बेसिकली मुझे रिटर्न कर देना है, मुझे आगे शॉर्ट फंक्शन कॉल नहीं करना है। मैं शॉर्ट फंक्शन कॉल कर रहा था ना ऊपर से, बड़े से एरे पे शॉर्ट फंक्शन कॉल कर रहा था, इस पे किया था, फिर शॉर्ट फंक्शन मैंने एक ये हटा के इस पे कॉल किया था, ठीक है, ऐसे कर रहा था। आखिर में जब शॉर्ट फंक्शन केवल सिंपल 1 रह जाएगा ना तो मुझे आगे शॉर्ट फंक्शन कॉल नहीं करना, मुझे रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये मेरी बेस कंडीशन होगी, ठीक है, कूल। अब मैंने क्या बोला कि तीन चीज़ें हम लोग को डिजाइन करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, बेस कंडीशन, ठीक है, बेस कंडीशन आ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस हम लोग डिजाइन कर ली कि हम लोग शॉर्ट फंक्शन किसी भी एरे पे लगाएंगे और उल्टा सीधा एरे हुआ अगर 2 1 3 हुआ तो वो हम लोग को 1 2 3 दे देगा, कोई। ये हम लोग हाइपोथेसिस डिजाइन करेंगे, हम लोग का फंक्शन काम कैसे करेगा। बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है, हम लोग का फंक्शन काम कैसे करेगा। अब है इंडेक्शन, अब इसको काम कराएंगे। जो हमने बोला ना कि ये काम ऐसे करना चाहिए, तो हम लोग को वैसे काम कराने के लिए यहाँ पर कोड लिखना पड़ता है इंडक्शन स्टेप में, ठीक है, कोड। तो देखो क्या है, मान लो हमारे पास फंक्शन है शॉर्ट 2 1 3, कोड, ठीक है। तो ये हमको 1 2 3 दे रहा है। फिर मैंने बोला हाइपोथेसिस क्या करेगी कि मैं शॉर्ट फंक्शन आखिरी में ये हटा दूंगा और 2 1 पे कॉल कर दूंगा, तो मुझे 1 2 दे देगा,
है ना। अब मेरी जिम्मेदारी क्या है, अब मेरी जिम्मेदारी क्या है कि ये जो 3 है ना, इसको मैं सही जगह पे डालूँ, है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि समझाने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, लेट्स से मैंने सॉर्ट फंक्शन कॉल किया 1 5 2 ले लेता हूँ यार, 1502 कूल। तो मैंने लेट्स से शॉर्ट फंक्शन इस पे कॉल किया, तो मुझे पता है कि शॉर्ट फंक्शन क्या करता है, मैंने डिजाइन करके रखा है अपनी हाइपोथेसिस, मुझे साफ साफ पता है कि शॉर्ट फंक्शन अगर इस पे कॉल होगा मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 1 नहीं मिलेगा, बल्कि 0 मिलेगा, 0 1 2 और 5 कूल। अगर शॉर्ट फंक्शन मैंने इस पे कॉल किया तो मुझे 0 1 2 5 मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने बोला हाइपोथेसिस, मैंने क्या बोला कि अगर मैंने ये लास्ट एलिमेंट हटा दिया, ठीक है, और मैंने फिर मुझे अभी क्या करना है, स्मॉलर इनपुट करना है, स्मॉलर इनपुट करा, तो मैंने स्मॉलर इनपुट करा, मैंने लास्ट एलिमेंट हटा दिया स्मॉलर इनपुट करने के लिए, कूल, ये लास्ट एलिमेंट हट गया, अब मेरे पास एरे बचा ये। ठीक है, अब मैंने हाइपोथेसिस से पहले डिजाइन कर लिया कि शॉर्ट फंक्शन करता क्या है, तो शॉर्ट फंक्शन वही काम इसके संग भी करेगा। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पर। आज शॉर्ट फंक्शन ने ये काम कर दिया, अब मेरे पास एक ये फंक्शन, तो ये इसने ये वाला मैंने बोला था कि केवल एक स्टेप नीचे जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इसको हटाऊंगा, केवल एक स्टेप नीचे जाऊंगा, आगे और चला के नहीं देखूंगा। ठीक है, इतना ही काफी होता है, उसमें अगर तुमने सही कोड लिख दिया तो तुम्हारा फंक्शन आगे नीचे तक सही काम करेगा। ठीक है, अब मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मेरे पास ये वाला एरे जो था, मेरे पास ये एरे दे रखा था 1 5 0 और 2। ठीक है, मैंने बोला 2 को मैंने निकाल लिया, मुझे ये एरे सॉर्टेड मिल गया। अब देखो अब मेरे पास 0 1 5 मिल गया। ठीक है, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरे पास 2 अलग बैठा हुआ है। ठीक है, ये 2 अलग बैठा हुआ है, अब मेरे पास 0 1 और 5 है। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं
0 1 5 के बीच में 2 कहीं सही जगह इंसर्ट करूँ कि ये पूरा एरे जो है वो सॉर्टेड हो जाए। ठीक है, बेसिकली अब मेरी जिम्मेदारी क्या है, इंडक्शन स्टेप में क्या हो रहा है, इंडक्शन स्टेप में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम समझ आ रही है कैसे अप्रोच करा। इंडक्शन स्टेप में अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि मुझे ये सॉर्टेड एरे मिल गया है स्मॉलर इनपुट पे। ठीक है, अब मेरे पास 2 अलग है, पर अब मुझे इस 2 को वापस इस एरे में इंसर्ट करना है सही जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग जो कोड लिखेंगे ना, वही हमारी हाइपोथेसिस को काम कराएगा, जो हमने बोला था जैसे काम करना चाहिए वो इंडक्शन फंक्शन में ही काम करेगा। तो बेसिकली अब हम लोग इस 2 को सही जगह पर डालना है। ठीक है, कर सकते हैं, बहुत ईजी काम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग अगर चाहें तो इस फंक्शन को एक और एरे बना लें और जैसे देखते हैं कि 0 बड़ा है 2 से क्या, नहीं बड़ा तो डाल दिया, 1 बड़ा है क्या, नहीं है तो डाल दिया, 5 बड़ा है, हाँ बड़ा है तो पहले 2 डाल दिया फिर 5 डाल दिया, सिंपल है, ऐसा काम कर सकते हैं। पर क्योंकि हम लोग रिकर्सन पढ़ा है ना, एक लूप लगा के इटरेटिव तरीके से भी कर सकते हैं इसको, बहुत सिंपल है। एक बार हमने क्या करा, मैंने क्या करा कि भाई मैंने बोला कि ये जो फंक्शन दे रखा था हम लोग को, ये 1502 ये जो एरे दे रखा था, मैंने बोला कि अब ये स्मॉल इनपुट करना है, स्मॉल इनपुट कर दिया मैंने, 1 5 और 0 कर दिया, ये एक बार मुझे सॉर्टेड होकर मिल जाएगा, तो 0 1 5 मिल गया। ठीक है, ये सॉर्टेड मिल गया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पास 2 बचा हुआ, जो मैंने 2 पहले निकाल दिया था। अब मुझे जब ये मिल जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी जो है कि 2 को इसको वापस इसको सही से इंसर्ट करना, वो मैं इंडक्शन स्टेप में करूँगा। अब मैं इंडक्शन स्टेप में कैसे करूँगा वो देखते हैं। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि भाई इंडक्शन स्टेप में आराम से हो सकता है, एक वो चला लो, लूप चला लो, यहाँ से आई की वैल्यू यहाँ पर है, मान लो अभी आई यहाँ पर है, तो इसको कंपेयर करेगा, उसको कंपेयर करेगा। ठीक है, अब इन दोनों कंपेयर किया, अब क्योंकि ये स्मॉलर इसको लिख दिया। ठीक है, फिर देखा 1 बड़ा है क्या, 1 बड़ा नहीं है तो 1 को यहाँ लिख दिया, देखा 5 बड़ा है, हाँ 5 बड़ा है, तो 2 को पहले लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 5 को लिख दिया। cool, सिंपल है। Oh, severe physical limits. Mhm. Church-Turing thesis. The principle establishes that any computable program can be solved by using recursion function. Set problem. Stack emulation. Any iterative can be converted into recursion by passing the loop counter and state variables as an argument to the next function call. Stack overflow, memory allocation. Every time a function call itself. This is known thing. Performance overhead. Calling a function requires a CPU instruction to push the data into the stack and jump to the new memory address. So far DSA we can do it, but in real life doesn't apply. I see. पर क्योंकि हम लोग क्या पढ़ा है, रिकर्सन पढ़ा है ना, हम लोग क्या पढ़ा है, रिकर्सन, तो हम लोग Did anyone send any message? Harsh Kashyap, hello bro. Yo, hello. मैं खाना खाने गया था bro. ये काम भी लूप लगा के नहीं करने वाले, हम लोग ये काम भी किससे करेंगे, रिकर्सन से करेंगे बच्चे। ठीक है, चलो ये काम भी रिकर्सन से करते हैं। अभी क्या करना है, यार ये वाला ऐड मेरे को याद हो गया भाई, अब मतलब ये ट्यून वगैरह सुन के डेटा एनोटेशन वाले हायर कर रहे हैं कुछ, अप्लाई करता हूँ रिप्लाई नहीं आता इनका सर। अभी अप्लाई से याद आया, कुछ रिप्लाई आया। एक भी जॉब नहीं होता, दिस इज क्रेजी। एक्स्ट्रा क्या सीनियर रोल के लिए तुम मेरे को क्यों ही लोगे भाई, पागल हो गए। रिकमेंडेशन सिस्टम एक चूतिया है। ये क्या क्या असाइनमेंट किया, कॉलेज वाला का अलग नशे है, मेरे को लगा इंटरव्यू का गुस्सा है।
सीधा हाँ हैक कर दूंगा भाई। क्या ये गया गया ये? ओह, मैंने मिस कर दिया क्या? मतलब मैं तो रजिस्टर कर रखा था। तुम लोग क्या टोकन को इतना जल्दी एक्सपायर क्यों कर देते हो? फालतू का है, रोज रोज लॉगिन थोड़ी करेगा कोई। लीड कोड का लगना चाहिए बस। ये क्या हो गया दफा? पहला से क्यों आ रहा है? मेरा अकाउंट उड़ा देगा तूने? सीरियस ब्रो दफा उड़ा जाएगा सच में? क्या ये कुछ नहीं है ब्रो। अगर मेरा अकाउंट उड़ाया ना भाई कसम से तो ना गाली दूंगा। तूने रजिस्टर करने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन क्यों लिया मेरे से? अभी डरा दिया मेरे को। चलो अकाउंट तो नहीं उड़ाया यार। मेरे को कौन 10 लोग फॉलो कर रहा है भाई? पागल हो गए क्या? Why you guys are following me man? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ब्रो। ये कौन? मैं दी हजूर। हाँ? नाम है या फिर निकनेम है कुछ? नहीं यार 7 आवर्स वाला में कॉपीराइट आया। क्या कॉपीराइट आ गया इसमें? मैं इसलिए म्यूजिक चलाता है फालतू का दिमाग खराब कर देता है। मैं कॉपीराइट से डर लग गया भाई। मेरा पुराना चैनल उड़ा दिया था। भाई कुछ स्ट्रीम क्या कॉपीराइट हटा सकते हैं? भाई जो कॉपीराइट आया उसका करो यार कुछ तो। This is what I want. What the fuck? There is no copyright, but in my phone it is showing copyright. 7 hours वाला है क्या? क्या है ये? ब्रो 7 hours वाला शायद। 7 hours या ये रहा। Remove it, remove it, remove it, remove it. 36 minutes चला गया वो वाला गाना। what the fuck? 36 seconds। उड़ा दे भाई, वैसे भी कोई देखेगा नहीं इसको। कौन चूतिया मैसेज कर रहा है? उधर भी ना चल दो भाई। मेरे को क्या दिमाग खराब कर रहा मेरा। जो भेज रहा है उसको पूछना भाई, मेरे को क्यों पूछ रहा है? कॉलेज वालों का अलग मैसेज चल रहा है। मेलोडी और लिरिक्स। वीडियो यूजर्स म्यूजिक मेलोडी और लिरिक्स Latin author Turner छपा सब्जेक्ट म्यूजिक पब्लिशिंग। सामान छूती है इतने लोग। एक गाने के इतने लोग मेरा मार लेते तो मैं क्या ही करूँगा? ओ, वैसे भी मेरा 1K सब्सक्राइबर है ही नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है।
भी एक और प्रॉब्लम है। और मैं तो शॉर्ट वगैरह कर लिया भाई, कुछ है क्या insertion? This is insertion sort using the question. insertion sort कैसे करते थे? कंपेयर करते थे, फिर वैल्यू को इंसर्ट मारते थे। मेरे को सॉर्टिंग वगैरह रिवाइज करना पड़ेगा, मैं याद नहीं रहा कुछ। Winning and losing can define success. On the field, wins are celebrated. ओके सो हाय अगेन। तो इससे पहले कि हम लोग कुछ आगे और प्रॉब्लम देखें, पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या लिस्ट बनाई थी प्रॉब्लम्स की, एंड लेट्स जस्ट स्ट्राइक ऑफ जो हम लोग कर चुके हैं ना। तो ये प्रिंट 1 to n और n to 1 कर चुके हैं और सॉर्ट एरे कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग करेंगे वो होगी सॉर्ट स्ट्राइक। ओके तो सॉर्ट स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। अब एक बार मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पढ़ा चुका हूँ कि तुमसे बोल सकूँ कि एक बार वीडियो को पॉज करूँ, है ना, और एक बार खुद से सोचो कि इसको कैसे अप्रोच करोगे। वी हैव डन अ सिमिलर प्रॉब्लम सॉर्ट एन एरे, ठीक है, एकदम सिमिलर थी, बस यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर क्या था, एरे था, यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, स्टैक है। सो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये प्रॉब्लम मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, वैसे ही अप्रोच करो इसको। बेस कंडीशन हाइपोथेसिस डिजाइन करो इसके भी, और इसके लिए भी इंडक्शन लिखो, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक बार वीडियो पॉज करो और इसके बाद कोशिश करो कि हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो देखो, और अगर हो भी रहा तो भी देखो, है ना। पर वीडियो तो देखो, पर पहले खुद ट्राई कर लो, है ना। चलो तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। ओके तो स्टार्ट करते हैं कि फ्लो क्या रहने वाला है हम लोग का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, इसके इनपुट और आउटपुट को देखेंगे क्या पूछ रहा है, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। एक्सप्लेनेशन में वही सिंपल जो अपन ने पिछले वीडियो में करा था, सिमिलर काम करना है, एकदम सिमिलर। बेस कंडीशन डिजाइन करनी है, हाइपोथेसिस डिजाइन करनी है और इंडक्शन डिजाइन करना है, ठीक है। और फिर इससे इसको पूरा करोगे तो रिकर्सिव सोल्यूशन अपना बन जाएगा। फिर उसका अपन कोड देखेंगे। अच्छा कोड हम लोग देख भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, डिपेंड करता है कितना समझ में आया तुम्हारे, क्योंकि बेसिकली इसका कोड बहुत ज़्यादा सेम होगा पुराने वाले कोड के जैसे, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी सेम होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मतलब। तो पहले तो देख लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। बेसिकली हम लोग को एक स्टैक दे रखा है, स्टैक दे रखा हुआ, स्टैक किस फॉर्म में दे रखा हुआ, मतलब हम लोग को स्टैक में इनपुट लेट्स से हम लोग को ऐसा दे रखा हुआ एक 5102 एक एरे दे रखा हुआ, इसको हम लोग को स्टैक में इनपुट कराना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग को इससे स्टैक बनाना पड़ेगा 5102। अगर ऐसा नहीं दे रखा हो, डायरेक्ट एक स्टैक गिवन है फंक्शन में, बहुत बढ़िया बात है, कैसे भी हो सकता है। मतलब बेसिकली तुमको एक स्टैक गिवन है कुछ ऐसा 510 और 2, cool, एक स्टैक गिवन होगा। क्या करना है अब, आउटपुट में क्या देना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलते हो उसको? क्या मैंने पहले रेज्यूमे वगैरह सब अपडेट कर दिया था? Found it. Resume. फुल स्टैक मैंने सारे रेज्यूमे बना रखे हैं, फुल स्टैक, नॉर्मल रेज्यूमे, टेक सपोर्ट भी बना दिया। लुक एट दिस, आई लिटरली कन्वर्टेड माय होल स्टफ इनटू टेक सपोर्ट फॉर, सारे डेवलपमेंट को टेक सपोर्ट में चेंज करते हैं। अरे एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, एप्लीकेशन सास एपीआई इंटीग्रेशन, कुछ भी डाल रहा था। एक्सपेरिमेंट ब्रो, एक्सपेरिमेंटिंग। फुल स्टैक इंजीनियर, यही अपडेटेड वाला है। इसको डालता हूँ इंडीड, पहले नॉट इंस्टाग्राम ब्रो, व्हाट द फक, इंस्टाग्राम में कहाँ लिखा था ये वो सब देखने का नहीं।
henceforth हाँ भाई तुम बस ओपन करके देखना, बस रिप्लाई नहीं करना, कुछ मत करना, बस ओपन करके तुम लोग देखना। तुम लोग के इसके लिए मैं एप्लीकेशन देता हूँ पागल चीज़ जैसा। Oh God. Maybe I should learn something low level जिसमें मजा आए, सजा भी लगे। I'm fucking wow. These guys are cooking something right now. I can't watch on the live stream. I should watch. I can learn a lot. Anthropic does not use AI. HTML streaming in Chrome. Like, oh, you guys are discussing about something. Streaming feature in Chrome. My man has put some video like crazy guy. I literally went from 1K to 80K with one video. Oh shit! I didn't try to open the image. I was trying to open the video. This video is like literally crazy video, bro. Where the fuck is that video? There was a big video. Here it is, 2.1 million. AI is changing the game for Is this a Minecraft? Run heaven normal difficulty. I was learning Kubernetes in the live stream. Oh, he has been doing past like I don't know why he's learning Kubernetes. What the fuck is this? Oh, Minecraft वाली दीदी है। Oh, I see. तुम्हारा फेस देख के मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। आप कोरियन लगते हो। Anti brain rot session. Shit, bro. मैं तो इतना पतला हूँ, मैं क्या ही बोलूँ। तुम इतना मोटे हो, तुमको पतला होने का मन होगा, मेरे को मोटा होने का मन होगा। डिफरेंस का। There you go. पॉडकास्ट पे बुला लिया है क्या? नहीं, ऑनलाइन पे चल। Why do I like this creepy stuff? क्या वीडियो नहीं चल रहा है क्या यार? भाई आजकल कोई भी वीडियो निकाल के देखो भाई, 7 मिलियन, 1 मिलियन, लाइक 100K। क्या ही करती हूँ, मतलब समझ नहीं आता है। इनके सारे वीडियोस में ऐसे लिटरली एवरी वीडियो। Before you could you watch this? I don't know it right now. I'm looking for fun. मेरे को लो लेवल का देखने का था, लो लेवल देखने के लिए आया था। क्या क्या देख रहा हूँ? एम्बेडेड सिस्टम्स, लाइक लेट मी चेक एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम्स में आई गेस देयर इज अ स्कोप। अबे इंग्लिश और हिंदी लाइक बड़ा और इंग्लिश और हिंदी का embedded system introduction to embedded system, embedded programming, maybe embedded programming is called embedded programming, right?
Yeah, let me check the job roles first. Embedded systems. As we can say, like there is a little smaller amount of jobs left. I guess. Okay. Now, like, let me ask. Let me ask. Does the embedded system as code in 2026 ready? These people might have asked somewhere. Is embedded system worth learning analysis of embedded system a future of trends? Do you say? Okay, he is enthusiast of embedded system. I literally wrote the whole history of embedded system for. Well, what does embedded system mean? Like writing on a raw. I mean, like how do I say that? Fuck, bro, I couldn't understand this stuff. 3 months ago, 1 month ago, how realistic is your job in here? Like a background in C and side project, I'm quite comfortable with pointers and memory. What the fuck are you thinking? Like, if you know more pointers and memory, they will hire you. If I get into the embedded system, then electrical people will start scolding me like, what the fuck, why this guy coming from IT to embedded system? Like, bro, don't eat my jobs. Same thing happened with us. Like, literally every other field guys will come to like IT and yeah, it's fucking crowded. Maybe I should learn embedded systems. Like, maybe there is a scope for that. One out of EC from tier 2 placements looks sketchy and every option, but now I'm stuck. Do I feel like I have interest in EC, but not a problem, but I hope that better 2030. I have a lot of time, buddy. Like, you're aiming at till 2030, right? Ah, fuck. BTech in 2030, bro. I don't even think like BTech will exist at that time. Maybe something different with AIs and stuff. Like, literally now, uh, even small kids from CBSE board can like have been studying like Python programming, bro. What the fuck? They are even doing data analytics with the Python. A lot of things they have been doing like since they're like small kids, man. But still they are doing a lot of stuff. Like their textbook covers everything. Oh, I need to learn C. Let me see scope of C. This yeah. Scope of C language. 2026. I don't know. Like if I write scope, then will it start showing me about the local scope, global scope? Why do we still use C in 2026? Argument to learn CS in 2026. Only programming language learn about it. So if I learn C, then it's more. I mean, how do I say that? Should I learn C?
I'm asking the AI should learn C in order to get a job where AI doesn't work. Literally, I'm asking the same machine which is going to replace, not replace, I mean like work after the people. Should I learn to see in 2026 how much percentage of jobs there, and mainly in India, how hard and how hard can it be to can it be to get the job? Okay, job, land a job, right? To land a job in C language, okay, base speed for fresher, or maybe someone who can write well. If you plan to target a specialized deep tech industries, if your goal is to quick web dev, like Python or JavaScript is a better option. But however, C remains undisputed king of performance critical software operating system hardware level code. Job percentage C and C++ grouped together. Job board because their ecosystem overlap heavily. Overall jobs on C are like 6 to 8%. Bro, there's no way. If you know C, mention some things. Oh, Doom was written in C. Wow. Well, maybe something. Maybe 2026. It's good. You man. Let me add an poll and know like what is the percentage of languages being used in my Discord server. Dot language use. Do you use often? Often. I'll put my JavaScript first. JavaScript, TypeScript, C++, C, RS, and what else we have? PHP, Golang. I know like people will start. How do I say that? Maybe like I should put a multiple answers thing. Like duration can be like for an hour. What else I can add here? JavaScript, TypeScript, C++. Let's see, Rust. Maybe I should add a full name Rust.
Rust, HTML, and what else we have? We don't have. It's mostly used by people on this language. Oh, I missed the Python. Now Wrench is going to scold me. Market, pin, 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 pin. There's a pin. Most of the people would, I guess most of the people will vote for the JavaScript or, oh, I forgot to add the Java. Shit. Alright. Well, massive AAA studios shifted their main development to C++ or C# years ago. Uh-huh. Oh, Animal Well was made using the C language. Wow. The game size only 34 MB. Oh, okay. C and what? Like, we can't write with the raw C, right? And what? Paired up with the multimedia libraries. Really? See, I have used Relic for 15 days, so I know a bit of Relic. I should have continued that series, man. Okay. Oh, this is hard, bro. Not this one. Like, you have a graphics programming, which is pretty much harder. In order to get this triangle itself, it will take more than 4 hours or 5 hours. This one, OpenGL, Vulkan. Nice. As an explorer, game day from scratch, which language to choose and why? How long it takes get started and make a small that can be published on what do you call that thing like stream. I want to explore the game development truly from scratch, meaning you want to build an actual game engine. Yeah. Not engine. I won't be building any engines. That's something. Pure C, the pure from scratch root. It's root or route. Choose if you want to understand exactly how computer work, and yeah, exactly. That is the reason I'm trying to pick up a old language and stick to it and get something running. Yeah. We'll learn the syntax as well as I will have a fucking project. If it is good, then I can get money to sell it. C++ industry from scratch. So what do you think? Like which one will give me the best thing? Like if I'm getting inside.
like digging deep. I knew this shit, bro. I know it's going to take time. Not rushing it. Like once I get some job, then I will be doing as a side business something. Not side business, but yeah, as a side project. I'll be learning game dev for fun. He said like learn basic syntax takes 1 to 2 months. Build engine and framework takes 3 to 5 months. Game contest and polish takes 6 to 9 months. Fine, but oh, I need to pay $100. What the fuck? Yo, I have to pay 10K for putting a game, bro. What the fuck? Damn. Any free platform? Or let's pick one. C or C++. You got 10 seconds. I need clear white. And if I like game dev, then I plan switch them. So decide carefully. Okay. Fine. SFML, but I think really this is pretty easy to get started. SFML, I need to do a lot of stuff setup. I mean, I have to download the file and I have to load it from there. Like, it take time. I'm just exploring for something fun, bro. Live mobile dev video. What the fuck is that? Shinigamian pipeline tinkering. Wishing there was something left to lose. This could be the day I die. How do I see how many people have downloaded this? This guy was making this game from past 4 years ago. Oh yeah, there it is. Wow.
Now he's making some different game, I guess. Makes no sense. Try to close some numbers after the decimal point and float. That could be something we try. But that didn't fix it, guys. Even just clamping to int didn't fix it. It's something else. I don't know. I'll have to do this with a fresh mind. I don't want to spend all day just looking at this. Why my message is not getting shown there? Where do you call render? I mean, there's no render call. I mean, there's literally just I render. I don't understand why that's important, because I don't use a render function. I mean, I wrote all of this myself. So for example, here is where I render the game objects. I use a program, I bind the texture, I set the viewport, and I showed all of that in RenderDoc. I feel like that should be enough. Target resolution, orthographic projection times. But the position is like, the position is 0, 0. Again, like the offset happens here. This is what causes the position to be broken. Because the orthographic projection is computed using well, now we did round, but it didn't change anything. Using a fractional dimension. OpenGL does nothing. OpenGL just takes in a matrix that I built, and it is multiplying the matrix by the position. And the matrix does the translation and rotation and projection. And the scaling. So like that's all in the projection matrix, and the projection matrix is done here. Right? And the problem is, again, but it happens here too. Like we have, well, maybe because the X dimension is 427, I don't know. And it needs to be a multiple of 2. Maybe the X dimension always needs to be a multiple of 2, I don't know. Not sure. I would have to test with Stardew Valley. Whoa. Yeah, I know that it's easy in monogame, bro. I get it. It's easy in monogame. I understand. Listen, I've been doing this for almost 5 years. I understand that it's easy somewhere else. I've been dealing with this shit all the time. It's easy in monogame, Kakas. It's easy in monogame. If you have to snap its uniform vector turn target resolution, intermediate position XY times 5 plus times 5 times resolution. Pixel position is floor. What the hell is that? Alien? Intermediate position is zombie. Right. Kill them, bro. Kill them. Kill them. Let me see here. What did you type? Let me see. So, maybe this is some magic. I haven't given up yet fully. Let's see. So we're taking the intermediate position, which is, you know, what we had before. Then we do a pixel position by taking XY, target resolution,
Don't know what that means, the target resolution, what that's supposed to be. Bruh, what is target resolution supposed to be? by 1057. Is that this? Is that is? So essentially, we can comment this out real quick. We can save it. We can start. Yeah, I know. Just wait. And then well, let's not move. So to test this, I have hot shader reloading. So 1 sec. Let's not do the round here, because it's still causing it. So now when I maximize it, I get the lines. And you are saying that in the shader, instead of doing just this, right, we do this. I'm pretty sure there's an error here somewhere, is there? No, there's not.